he's trying to do something there. So he wanted to present early so that he can Okay, okay. leave and Sure, get sure, the no new worries. person ठीक है, present. so we can get started. So I'll repeat myself again section for you. Yeah. क्या क्या categories हैं या क्या क्या areas हैं जिसमें हम going to be looking at things. First is your core business clarity from your presentation. Okay, what is the problem that you're trying to solve? Uh, how big the problem is? How are you different? And why is this a unique solution? The second parameter is market analysis. Have you done any market analysis in terms of identifying uh, sort of competitors, placement, people, and so on? Then is user persona. How well Okay, do sir. you know your users? Fourth is overall strategy of the digital marketing, meaning आपने end to end जो 6 step process था वो follow किया है कि नहीं किया है. And then is the content, the overall what material have you used, what sort of data you presented and so on and so forth. ठीक है? Yes, sir. So can I present? Yes, please go ahead. Oh, just a sec. So what are you doing at Microsoft Office, Saksham? Yeah, actually, sir, me, Tanish, Yuvraj, and Aviral, we are both from Team Ajnabi. We all four. And right now, we are organizing an hackathon. We are the coordinators of that hackathon. So we have to like organize. It's a hack with mate. We are from Maharaja Ghazi Institute of Technology. And yeah, okay. So can we start, sir? No, Tanish will be start presenting. Sure, sure. Please go ahead. Thank you, sir. Thank you So for is the the screen screen visible? visible? So is the screen Yes. visible? Okay, Tanish, Yeah, start. the screen is visible, not in the presentation mode. I think we can see all the slides and the major slides as well, like the selected Just slide. is it in the presentation mode now? Yes, now it is. Okay, sir. We are Team Ajnabi. So it's a salon book. It's a salon. Just a second. Give me a second. Okay. So it's a salon booking app, and why Ajnabi is required. Okay. So like Saksham is from a salon background. His mother owns a salon. So in जब हम इनके मतलब Saksham generally अपने मदर के salon में जाता है, तो वहां पर जब स्टाफ होता है, वो कहता है कि वो 1 से 4 तक वो मैक्सिमम टाइम वो खाली रहता है. ठीक है. मतलब उनपे कोई मतलब मैक्सिमम 1 या 2 कस्टमर्स आते हैं उस टाइम पे, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि ये जो उनका टाइम है 1 से 4 तक का, और कभी कभार ज्यादा भी होता है, तो वो जनरली वेस्ट होता है. तो वो चाहते थे कि इस टाइम को भी वो लोग यूटिलाइज करें, ताकि मतलब और कस्टमर आ सके और थोड़ा उनका रेवेन्यू बढ़ सके. तो इसलिए हमने अजनबी बनाया. हाँ, इट्स लाइक फ्रॉम द ये था हमारा क्या कहते हैं सलोन के साइड का प्रॉब्लम. और जो हमारे कस्टमर्स का प्रॉब्लम है बेसिकली वुमेन, उनका मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनको चाहिए वैरायटी. लाइक एवरी ह्यूमन नीड्स वैरायटी एंड कन्वीनियंस, सो दैट्स व्हाई वी मेड अजनबी. लाइक दे कैन ब्राउज ऑल द salons nearby, and they can review on that. Okay, so yes, sir. So basically, जैसे अभी तनिष ने बताया कि like for taking an example of my book my show, it's very convenient to see कौन सी पिक्चर्स लगी हुई हैं instead of going particularly website की particular websites पे जाके जो भी पीवीआर होते हैं उसमें. So what the problem basically women is facing is कि काफी स्ट्रगल होगा कि अगर ऐसा हमारा अजनबी ऐप ना हो तो अगर तो काफी स्ट्रगल होगा कोई भी सर्विसेज को ढूंढने में, कोई भी सैलून्स को ढूंढने में. एंड टू बीट दैट स्ट्रगल वी इंट्रोड्यूस अजनबी. So basically in 3 single steps: search, book and confirm, you can book an appointment in your nearby salon. This is the glimpse of our salon. There is a nearby salon. ऐसे आप देख सकते हो बहुत easily. आप अपनी कोई भी सर्विसेज को कार्ट में ऐड कर सकते हो, एंड आफ्टर अ वेट ऑफ 10 to 20 seconds आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा. सो बेसिकली वो जो मेहनत थी इंडिविजुअल सैलून्स को कॉल करना और देखना, आसपास में पूछना, उसको हमने 30 seconds के अंदर कंबाइन कर दिया है.
अगर मैं अपनी यूएसपी की बात करूं तो बुकिंग जो है वो 30 सेकंड्स के अंदर आ गई है, एज आई टोल्ड यू। नियर बाय सैलॉन्स आपकी फिंगर टिप्स में, अब आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके स्पेसिफिकली नहीं देखना पड़ेगा, गूगल मैप्स पे नहीं देखना पड़ेगा। रियल टाइम अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगी वो सैलून ओपन है कि क्लोज है। एक्सक्लूसिव डील्स एंड डिस्काउंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मार्केट शेयर, जो जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो हमारी 18 टू 25 ईयर्स के बीच में है, एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारी 25 से 55 ईयर्स के बीच में है। अगर मैं अजनबी कहाँ पे फिट करता है, अजनबी कम्स अंडर द इंडियन सैलून इंडस्ट्री। So it was like in till 2020, the Indian salon industry was 90,000 crore. INR 90,000 crore, and it is expected to reach to INR 1.75 trillion by 2026. Also, अगर मैं इंडियन सैलून इंडस्ट्री की बात करूं पूरे इंडिया में, so 8% जो है वो दिल्ली एनसीआर कंट्रीब्यूट करती है, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 92%, लाइक मेजरली दिल्ली एनसीआर में ही है। अगर मैं ग्रोथ ऑफ ग्लोबल की बात करूं कि सैलून मार्केट कहाँ पे स्टैंड करता है 2022 से 2030 तक, सो इट्स ग्रो फ्रॉम 2020 से 150 बिलियन से 2026 तक 250 बिलियन तक जंप करा है उन्होंने। 100 बिलियन डॉलर्स का जंप हुआ है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि बाय 2030 इट विल बी हिट 400 डॉलर्स, 400 बिलियन डॉलर्स। नाउ व्हाट इज, इफ आई टॉक अबाउट रेवेन्यू मॉडल, तो हम कमीशन चार्जेस करेंगे सैलून से, जो भी लाइक 3 to 4% वी विल चार्ज कमीशन। आई एम द बेस्ट पॉलिसी, आई एम द बेस्ट पॉलिसी बेसिकली क्या है, इफ आई कंपेयर इट विद जोमेटो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप रिकमेंडेड वो देखते हैं रेस्टोरेंट्स होता है, इन अ सेम वे सैलून हमें कुछ अमाउंट पे करेगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, हम उसके सैलून को एक हाई उस पे रख देंगे, डिमांड पे रिकमेंड कर देंगे। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन डेफिनेटली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे वीएलसीसी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, O3 होता है, तो हम उनसे स्पॉन्सरशिप लेके हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी या तो हम उन्हें रीडायरेक्ट करा सकते हैं, या एज अ स्पॉन्सर की तरह हम उन्हें शो करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म फी, एज तनिष टोल्ड, कि जो कन्वीनियंस होता है कि टू मेक इट एनी इजियर, आज के जमाने में सभी पैसा देते हैं कन्वीनियंस फी के लिए, सो वी ऑल्सो चार्जिंग नॉट अ वेरी हाई चार्ज, इट्स अ वेरी मिनिमम चार्ज लाइक 5 to 6 rupees. Now, if I just wait a second, sir. Mm, mm. So is my screen visible? Yeah. Okay. Uh, So as discussed in your previous workshop, sir, we have created a salon owner persona and user persona also. Salon persona की अगर हम बात करें तो हमने salon से जो medium salons होते हैं, like 30 to 50% अर्बन एरियाज में हर एक लोकल salon होते हैं 30 से 50, हाई प्रोफेशनल बहुत ही कम होते हैं। तो जो 30 से 50 जो सैलॉन्स है, बेसिकली दे आर लोकल सैलॉन्स, एंड व्हाट आर मोटिव इज टू मेक लोकल टू वोकल। पेन पॉइंट्स की अगर मैं बात करें तो कभी कभार ऐसे, अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल लूं करवा चौथ का, तो आपने देखा होगा करवा चौथ पे काफी एक पर्टिकुलर सैलून में बहुत भीड़ आ जाती है, और उस भीड़ को मेंटेन करना भी सैलून के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लाइक किसने करवाई थी बुकिंग, किसका पैसा हो गया, किसका नहीं हुआ। तो हमारे पार्टनर ऐप के थ्रू भी वो मैनेजमेंट बहुत ईजिली देखा जा सकता है। गोल्स की बात करूं तो डेफिनेटली आई टोल्ड यू वी वांट लोकल टू बी वोकल। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोकल सैलून्स हैं, जैसे तनिष ने बताया कि 3 से 4 मतलब दोपहर का जो टाइम होता है, कुछ सैलून्स के पास यूजर आते ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होता, जिनको आना भी होता है वो अपने नियर बाय पे चले जाते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है। तो वी वांट कि वो सैलून्स वहाँ पे शो हो, उनको भी दिखाया जाए कि जो भी लोकल सैलून्स है वो अपनी सर्विसेज शो कर सकें। कस्टमर पर्सोना की बात करें तो रिसेंटली हमने 2 लड़कियों का भी इंटरव्यू लिया था हमने, गरिमा, शी इज फ्रॉम 4th ईयर कॉलेज, एंड दीपांशी। तो बेसिक दीज एज ग्रुप इनकी 18 से 35 के बीच में ही है। सो पेन पॉइंट्स इनको भी, जो इनके पेन पॉइंट्स है वो ये थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर अ सैलून। लाइक अगर मैं आपको बात, लाइक ये जब दीपांशी जो है शी इज फ्रॉम हॉस्टल, तो इट्स वेरी, तो होम सर्विसेज हॉस्टल्स में प्रोवाइड नहीं की जाती, लाइक अगर वो अर्बन कंपनी हो चाहे आपकी यस मैडम हो, वो उसमें बुक नहीं कर सकती क्योंकि हॉस्टल अलाउ नहीं करता एक थर्ड पर्सन आके आपके हॉस्टल में जाके सर्विसेज करे। सो दे आर फेसिंग दिस इशू कि एक तो बजट कंस्ट्रेंट होता है कि कोई सर्विस लो टू हाई हम देख नहीं सकते, नियर बाय सैलून कौन सा है, और रेटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रेटिंग, कि वो सैलून अच्छा भी है कि नहीं है, कैसे रिव्यूज है उसके। सो वी टॉक अबाउट दैट एंड वी implemented them in our app. Third thing is the goal. As I told you, compare and booking salon services इनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो वो फ्राइडे तक थकी हारी आती हैं, और हमने वर्किंग प्रोफेशनल से भी बात की थी, तो दे ऑल्सो सेड कि हाँ हम फ्राइडे को, जैसे प्रीवियसली आपने बताया था कि फ्राइडे मोस्टली बुकिंग नहीं होती, यू आर राइट से, वो फ्राइडे उस टाइम पे मैंने आपको गलत बताया था, फ्राइडे सही में ज्यादा बुकिंग नहीं करती हैं, दे मोस्टली सर्च ऑन आपके जो भी वीक डेज होते हैं उसी में सर्च करती हैं, और फिर वो एक पर्टिकुलर सैलून को कॉल करती हैं, या वो जाके पहले अपॉइंटमेंट ले लेती हैं। मार्केटिंग गोल्स की बात करें तो हमारा प्रोजेक्टेड ये है कि इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वी आर थिंकिंग ऑफ कि हमारा ऐप जो है वो 2500 ऐप डाउनलोड्स हो जाए। दिस इज द राइट साइड में हमारा सर एक पोस्टर है,
जो हम बेसिकली सैलॉन्स को जाके दे रहे हैं अभी राइट नाउ। सैलॉन रजिस्ट्रेशन वी आर प्रेडिक्टेड कि हमें कैसे भी करके इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में 100 रजिस्ट्रेशन तो लानी ही लानी है। ब्रांड अवेयरनेस की बात करें तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोकल एरियाज में कम से कम जितने भी हम सैलॉन पे जा रहे हैं 15% तो हमारे ब्रांड्स को रिकॉल करें कि हाँ अजनबी एज अ ब्रांड जहाँ पे हम अपने सैलॉन को रजिस्टर कर सकते हैं। बजट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बजट एलोकेशन में व्हाट वी हैव थॉट, हमें जो भी बजट मिलता है उसका 40% हम डिजिटल एड्स में डालेंगे, जैसे गूगल एड्स होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में हम सिर्फ 20% देना चाहते हैं। एसईओ ऑन कंटेंट में हम 15% देना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट आपके गेस्ट आर्टिकल्स ऑप्टिमाइजेशन में। सोशल मीडिया में वी आर थिंकिंग ऑफ कि हम अपना 10% जो भी हमें बजट अलॉट होता है, जो नेस्कॉम का जो भी हम विनिंग अमाउंट होता है उसका हम 10% अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट एंड एंगेजमेंट में डालेंगे। कॉम्पिटिटर्स की मैं बात करूं तो अर्बन कंपनी हमारी डेफिनेटली कैन बी अ कॉम्पिटिटर, यू कैन से इनडायरेक्टली। बिल्लू ऐप इज लाइक सिमिलर टू अस, बट बिल्लू ऐप के काफी ड्रॉज एंड फ्लॉज, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स एंड फ्लॉज हैं। वी टॉक अबाउट द पर्संस हु आर यूजिंग बिल्लू ऐप, दे आर नॉट यूजिंग बिल्लू ऐप राइट नाउ बिकॉज उसके यूआई के बेसिस में वो यूज नहीं कर रहे हैं और उसमें फॉल्स कमिटमेंट बहुत ज्यादा है और कुछ कुछ ऐसे फेक सैलून उन्होंने ऑनबोर्ड कर रखे हैं जहां से बुकिंग एक बार हो जाए तो कंफर्मेशन वगैरह कुछ नहीं आती, जस्ट टू शो द मार्केट कि हाँ हम पे इतने सैलून है। लोकल सैलून वेबसाइट डेफिनेटली, बट दोस लोकल सैलून वेबसाइट जो हमने यहाँ पे मेंशन अभी नहीं करी है, बट व्हाट वी आर वांट टू से, जैसे लैक में होता है आपका या आपके जितने भी हाइटोनियन का है उनकी खुद की वेबसाइट्स होती हैं। बट वी वांट कि वंस वी बिकम अ ब्रांड देन डेफिनेटली वी टारगेट वो लोकल्स जो हाई प्रोफेशनल सैलून्स हैं, हम उसको अपनी ऐप में लाएं। सो अजनबीज की मार्केट पोजीशन की यूएसपी की, एज आई टोल्ड यू, सैलून स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। एंड डिफरेंशिएटर अगर हम अपनी बात करें तो राइट नाउ कोई भी ऐसा सैलून नहीं है या कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जहाँ पे आप जाके कंपेयर कर सकते हो सैलून्स को। कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जहाँ पे बुकिंग मैनेजमेंट सिंपली होती हो सैलून्स की। फोकस हमारा क्या है कि फोकस हमारा सिर्फ यही है कि आप आज खाने के टाइम पे अगर आपको जोमेटो याद आता है तो इन 5 साल बाद अगर आपको सैलून कोई नाम ले तो आपको अजनबी आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम जो टारगेट हमारी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं तो हम उनको लोकेशन बेस्ड ऐड के हमने सोचा था कि सोशल मीडिया से जो इतनी भी लोकेशन बेस्ड हैं जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह है उनको स्पेसिफिक वही ऐड शो करवाएं। गूगल सर्च एड्स भी हम कर सकते हैं, जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं सैलॉन्स नियर भी हम वो डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम डेफिनेटली सोच रहे हैं, जैसे काफी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट मोस्टली जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं एंड लाइक ब्रांड प्रमोशन करते हैं अपने जो भी वो ब्यूटी जैसे वो दिखाते हैं डेली रूटीन में, गेट रेडी विद मी वाले में हम उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं। कंटेंट मार्केट में वी आर वर्किंग ऑन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट टाइप्स में हम वीडियो एड्स लाना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट लाना चाहते हैं और टेस्टिमोनियल्स बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। लाइक राइट नाउ वी हैव 3 to 4 टेस्टिमोनियल्स जो हमने डेमो ऐप के साथ उन्हें दिया था, बेसिकली डेमो सैलून, कि आप एक बार यूज करो आपको कितना कन्वीनियंट लग रहा है इसको यूज करना और वर्थ इट है कि नहीं। कि अगर मैं केपीआई की बात करूं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की हमारा जब अभी राइट नाउ जो सबसे बड़ा टारगेट है वो यही है कि जो हमारे ऐप डाउनलोड्स है वो 2500 हो जाएं कैसे भी 3 महीने में, क्योंकि हमारा मेन ऐप जो है वो गूगल प्ले के अंडर उसमें है, रिव्यू में पार्टनर ऐप इज लाइव ऑन द गूगल प्ले स्टोर। यूजर एंगेजमेंट हम डेली ट्रैक करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा यूजर कौन से सैलून या सर्विसेज को देख रहा है। लाइक इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपका जैसे लेट सपोज किसी वुमेन ने अभी हेयर कट करवाई है या केरेटीन करवाया है, देन आफ्टर 2 महीने या 3 महीने बाद वो कैरेटीन कितने महीने तक चलती है उसके हिसाब से एक पुश नोटिफिकेशन देंगे ताकि यूजर हमारा रिटेन रहे। कन्वर्जन रेट हमने सोचा है कि 10 से 15% बुकिंग हम कन्वर्जन रेट लेके चलेंगे। यूजर रिटेंशन सबसे बेसिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक हमें 50% कैसे भी करके जो यूजर्स हमारे ऐप को यूज करेंगे उसका 50% हमें रिटेन करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सर। what videos sir, yeah, one thing more I have to add, we have video also, like जो digital marketing video हमने बनाई थी when we launched our app, if you want तो we can show that also, Instagram पे भी Please हमारी sir. share that. Okay, thank you sir. Sir, this audio is visible? Yes.
ओके सर, तो ये वीडियो हमने तब पोस्ट करी थी जब हमारा ऐप जो पार्टनर ऐप था लाइव हो चुका था। सो विद इन अ 1 आवर हमारी जो रीच थी वो 2.5 के पहुंच गई थी इंस्टाग्राम पे उसी मूवमेंट पे। तो हम काफी लाइक सरप्राइज भी हुए थे कि राइट नाउ सिर्फ पार्टनर ऐप ही हुआ है। एंड वेबसाइट भी हमारी लाइव है ajnabi.in। राइट नाउ उस पे भी हमारा जो 1 वीक का जो कस्टमर रिटेंशन था उस लाइक नथिंग इज पोस्टेड, बट वी गॉट 1000+ व्यूअर्स ऑन दैट, लाइक not from India, USA also, and from Saudi Arabia also. So that's all from our side, sir. We are open to Q&A. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो कमिंग, ये जानबूझ के डबल एम लिखे थे? सर हाँ, वो गलत प्रिंट हो गया था एक्चुअली। वो दूसरी वीडियो आपको शो करनी थी जहाँ पे हमने कमिंग सून सही लिखा था, वो गलती से वो वाली चली। वाह, इंस्टाग्राम पे सही, व्हाट अ इंस्टाग्राम पे ब्लंडर। सही पोस्टेड है। Every meeting is a marketing meeting, like I said the last time. Yes, So sir. I think I'll come to the whole feedback, and probably because I'm giving detailed feedback will not be, उसको type up करने की जरूरत नहीं है. You can take a note. अगर उसमें से कुछ रह जाता है, probably we can have a different discussion. Okay, sir. So overall, I feel again, I think I felt personally that this is an idea that has been tried before. जो इसका ओवरऑल यूएसपी है वो क्लियरली आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उतना क्लियरली नहीं निकल के आया। मीनिंग आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो कि वॉक इन वर्सेस शेड्यूल्ड का क्या नंबर है आज की डेट में। हाउ मेनी वॉक इन people are coming to a salon versus how many are scheduling their appointment. Uh, Yeah. yes, sir. Yes, sir. Continue. Sorry. And what is the difference between, let's say, urban company, the USP versus you, Ajnabi as a brand? Uh, why would people sort of not come, not make appointments for home versus going to salon? What is the difference? And ये भी एक बड़ा interesting fact hota to look at in market analysis, that after urban company, how much the businesses have been affected. The salon के business या कोई भी जो services के business है उन पे क्या affect हुआ है. There must be some sort of research around it. So I think would have been very interesting to see all of that. The third thing you did in your stating the problem statement is you showed a number of the industry, salon industry, like, how big that is, 90,000 crores. And then the next line, the number was 1.3 trillion. तो अगर पहली बात तो अगर हम करोर्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो वही nomenclature रखें. If you're going to million, billion, trillion, then use that same sort of narrative. Don't use Yes. it interchangeably. दूसरा, Yes. is it, are you creating salons? How does that industry number affect you? Is the whole point. Is it the number of salons? Is the number of appointments? What exactly was the link between that? वो clear नहीं हुआ in sort of your problem statement. So I think spend a little more time on digging deeper on the problem statement Yes. and how specifically your solution is different or maybe better than everything which is already available. Yes. Maybe one element on identifying के actually में salons कितने अपने apps use करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो, do they even use any calendar or time management software? Uh, does it even add value to them? And maybe identifying one more element here is how much money will it save them? Because it will help you sell not just to anybody who you're presenting about your idea. Is going to sell this idea to the actual salon owners as well. Like you can tell them that you can uh, have 20% more revenue every month or 30% more revenue because of using this. Yes, sir. That then becomes a catch for them to be on the platform. And you have to back it up with some sort of research or data, or either research or theoretical data, or an actual survey or research you've done on the platform. Okay. Yes, sir. So can I answer some of the questions?
Yes, yes. You can just park the questions. Let me do all the elements and then we can take questions. Competition के केस में I think you did highlight some of the competition, but Yes. यहाँ पे detailed analysis की जरूरत है. Especially, it seems to be a little more competitive and crowded market as of now. What exactly are you doing? What is their revenue model? How do they make money? How do they, schedule appointments, meetings? What is working for them? What is not working for them? The more deeper you go in competitor analysis, the better, your product and service will be, because you can clearly identify what the pain points for them are, rather than sharing one line item. So probably dig a little more deeper on the competitor analysis. For the for this, I've given you, I think, 2.5 on 5. So you did have like a list of competitors, and I think overall, where your market is going, but at the same time, the more details you'll have, the better it will be. Yes. User persona, I've given you 3.5 out of 5. I think a few things that you can do better here is how much money, what time, and what is the age, demography. Age बताई थी आपने, but demography क्या होगी? कितने पढ़े लिखे हैं वो? What are they actually using the apps? Are they actually, what are the other different apps that they're using? Uh, how much money they are making? What are their usual timings to do things? जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, like what is the Yes. freest time for them? What do they do on a Sunday afternoon, to a Wednesday afternoon, or whatever? Yes. Then what is there again? Demography. In which cities would you start this? Uh, you know, uh, is that a challenge in those cities to begin with, or it's something they can do without? So again, a little more detail on the persona. Yes. Then overall strategy may again the details were so devil is in the detail is all I'll say. The You did highlight what are you going to do at a very high level on some bullet points, but it would have been amazing to see how much of it will you do. एक आपने टाइम फ्रेम दिया था, आई थिंक 2500 3 महीने में आपको रीच करना है. But to do Yes. that, how many campaigns would you have to run? What will be the cost of that? How much content will you need to create in each of those channels that you talked about? So I think a strategy, a plan is needs to be a little more engaging and detailed. जितना आप उसमें डिटेल डालेंगे उतना ज्यादा बेटर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे. Okay. Yes. Then the content overall, I think the one thing that I pointed overall, it was good. Whatever you showed, I think there was a brand logo in most of the slides, but don't miss out on any slide. There were a few slides that I couldn't see the brand logo and the name and everything. It's always an opportunity to leave your mark if you're presenting something. Yes. And I think don't share anything which is having a spelling mistake. Um, I think that goes without saying. That's a very basic. Yes. ठीक है, गलतियां होती हैं, but again, Sorry, don't. sir. It just goes without saying that it will do more damage to you than not doing anything at all. Okay. Yes. So I think दम है, कुछ कर सकते हैं. But at the same time, it still seemed a little surface level. We need to go way more deeper and find out what exactly the strategy would be, the market would be, the problem would be, the persona would be, and your strategy would be. Yes, sir. Okay. Now you can ask Sir, me questions specific. yes, sir. So I'm Yuvraj here from Team Ajnabi. So, Yeah. sir, I want to answer some of your questions. Like you said, कि market की like proper क्या मतलब क्या differentiation है कि कितना percentage किसके पास है. Like Yeah. Saksham has told you कि 90,000 crores की market है इंडिया की. So हमने उसमें research करी थी तो
फॉर ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मार्केट है अभी इंडिपेंडेंट सैलून ओनर्स के पास है। लाइक आप देख सकते हैं जैसे गीतांजलि है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो ऐसे जो भी इंडिपेंडेंट ब्रांड्स हैं उनके पास अभी 50 to 60% के बीच में भी मार्केट है। और जो अर्बन क्लैप है वो अभी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उसके पास 15 से 20% मार्केट है। एंड जो बाकी हमारे फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, सो अभी उसके पास सिर्फ 5 से 6% है। बट हमें इसी परसेंटेज को बढ़ाना है। एंड लाइक हम आपने कहा था कि हमारे में क्या यूएसपी है और अर्बन क्लैप में क्या नहीं है, वो भी मैं एक चीज आंसर करना चाहूंगा। तो हमने ये चीज रिसर्च करी है और हमने ये चीज देखा है कि लाइक एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल लाइक अगर आपके घर में कोई डिलीवरी वाला भी आता है तो हम जब तक ही कंफर्टेबल होते हैं जब तक वो डोर स्टेप में है। अनटिल एंड अनलेस जैसे ही वो डोर स्टेप के एंटर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक सेफ्टी इशू होता है, ट्रस्ट नहीं होता और अनकंफर्टेबिलिटी होती है। तो सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कोई घर में आके सर्विस करे इज नाउ नॉट मेकिंग द पॉइंट इन द मार्केट, दैट आई वुड से। तो जितने हमने लोगों से बात करी है तो वो यही कहते हैं कि लाइक हमें जाना तो पसंद है ही, बट ये हमारी हसल कम हो रही है कि लाइक हमारे पास ऑलरेडी डिटेल्ड लिस्टिंग्स हैं सैलून्स की सारी हमारी ऐप के अंदर। तो अभी आपने बिल्कुल सही चीज बोली कि हमारे पास डिटेल्ड एनालिसिस अभी भी नहीं है, जस्ट बिकॉज अभी तक हम मार्केट में उतना इंडल्ज नहीं हुए हैं। सो दैट इज आर टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपनी एक ब्रांड बना लें। लाइक लोगों को पता चल जाए कि ये अजनबी है, ये करती है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि लाइक लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है और क्या चीज नहीं पसंद आ रही है। दैट इज आर मेन टारगेट फॉर नाउ। क्योंकि हमें अब लाइक मान लो रियल यूजर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा और दैट विल बी आर मेन पॉइंट कि वो हमें सिखाएगा कि यस दिस इज गोइंग वेल, दिस इज नॉट गोइंग वेल, दिस इज हाउ कस्टमर्स विल रिटेन, दिस इज हाउ कस्टमर्स विल नॉट रिटेन। एंड हमने एक और चीज देखी थी कि लाइक हमने बात करी थी कि अगर जैसी अगर फॉर एग्जांपल हमारा ब्रांड अगर बाई मतलब आई वुड से कि कोई ट्रस्ट बिल्डअप कर पाता है मार्केट में, सो जो भी आपके वर्किंग स्टूडेंट्स हैं फॉर 18 to 25 तो वो ट्रस्ट कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर कि लाइक अगर वो कोई आउटसाइड सिटी में गए हैं और उनको लाइक कोई भी गो टू सैलून चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली से बात है वो घर पे नहीं बुला सकते या फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल, सो यस दिस वुड वर्क फॉर देम। एंड बाकी सब चीजें आई हैव नोटेड योर पॉइंट्स एंड यू आर कम्प्लीटली राइट। एंड वीडियो के लिए सर सॉरी, वो जल्दीबाजी में थोड़ा सा वो गलत हो गया स्पेलिंग मिस्टेक वाला, बट वी हैव यस वी पोस्टेड द करेक्टेड वीडियो। एंड जैसे आपने बात करी कि आपके पास मतलब हमने कोई आपको प्लान्स नहीं बताया कि हमारे सोशल मीडिया के क्या प्लान्स है, बट यस वी आर वर्किंग, वी हैव मेड आवर टीम फॉर दैट एज वेल कि जो हमारी कंटेंट पे काम कर रही है। एंड वी हैव ऑल्सो प्लान कि हम इंस्टाग्राम पे लाइक वी हैव प्लान समथिंग कि हम रील्स डालेंगे और लाइक मंथली कितनी रील्स आनी चाहिए, वीकली कितनी रील्स आनी चाहिए, पोस्ट कितना जाना चाहिए। एंड वी हैव ऑल्सो मेड अ टीम की जो सैलून्स के साथ जाके बात करे। लाइक हमने दिखाया था आपको एक पोस्टर है, सो वी आर लाइक टॉकिंग विद द सलोन्स की उनका क्या राय है। लाइक मैं पर्सनली एक सलोन ओनर को जानता हूँ जो मेरे मतलब काफी क्लोज हैं। तो मतलब दो दो हैं सलोन ओनर्स, तो मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी यही बोला कि चलो दिस इज वेरी गुड, हम भी ये सब चीजें सोच रहे थे, बट यस कि क्योंकि उनके पास शाम के पास पीक आवर्स होते हैं या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीजें वो कर सके, ये सब चीजें हैंडल कर सके। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको एक उस लेवल पे पहुंचा सके जिस लेवल पे वो लाइक डेफिनेटली हेल्प कर सके, लाइक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लाइक इट वुड बी द बेस्ट। एंड हिंदी में भी हम सोच रहे थे कि लाइक इसको मल्टीलिंगुअल बनाएंगे। जैसे आपने बोला कि सारे एजुकेटेड नहीं होते, यस यू आर राइट, कुछ स्मॉल वो होते हैं, स्मॉल सैलून्स होते हैं जिसमें लाइक इंग्लिश कितनी प्रेफर नहीं करी जाती या मान लो हिंदी ज्यादा प्रेफरेबल होती है। सो हम अपनी पार्टनर ऐप को हिंदी में भी वो करेंगे लाइक मल्टीलिंगुअल बनाएंगे, तो अगर उनकी लोकल लैंग्वेज है तो वो भी उनको यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज द पॉइंट्स आई वांट टू ऐड। Okay. No, thank you. I think to your first point, I would still say okay, try to identify how much market share has Urban Clap taken. What is the user journey looking like for urban sort of users versus rural users, and यस सर। every village should have like a single person parlor, right? And I think you can solve a major problem for them with the scheduling if you go into that direction. But look at what are the trends coming up. Like you are saying that people are more interested to go there in person. I don't know if that's true or not, but how do you identify that? Like back it up with that research and data. Uh, यस सर। okay. Any questions from this team? I think overall a good presentation.
Yes, sir. Any questions आप लोगों से? No questions? सर आप हमारे से बोल रहे हैं अजनबी से? हाँ जी, अजनबी से बोल रहा अच्छा अच्छा, नो हूँ. Yes, सर. yes, everybody can ask questions. Yash has a question. Hi, Saksham. I want to ask one question. Like, Ajnabi is only oriented for women or the men also? For now it is only for women and we will target like हमारा जब तक ब्रांड या फिर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता हम वुमेन पे ही रखें, बिकॉज मेन ट्रस्ट जो वाला इशू आता है वो वुमेन के लिए ही आता है. सो एंड वो गो टू सेरेमनी प्रेफर करती हैं, सो इसलिए हमने अभी वुमेन्स के लिए रखा है. अनटिल एंड अनलेस हम एक अपना ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर लेते हम वुमेन के लिए ही रखेंगे. until and unless we reach a point कि like yes for now we can also do for men also. और वो उसके लिए हम थोड़ा अलग से प्रोफाइल बनाएंगे कि लाइक उनका भी सेपरेट हो, कोई ऐसे लाइक मतलब वो ना हो कि कोई ट्रस्ट इशू ना हो. एक ही ऐप में लाइक दो दो प्रोफाइल्स दे कैन यूज बोथ. Why did you Okay. choose the name Ajnabi? Okay, so basically my father owns a restaurant. मैं पहले ओन करते थे तो आई लर्न फ्रॉम दैट. उन्होंने सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम एक ऐसा सोचा था कि एक कैची हो. कैची इन द सेंस कि वो मार्केट में एक प्लेस बना सके. उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम Catchy. सोचा था चाचा का ढाबा. कैची इन द Catchy. सेंस कैची कैची नो नो सर I कैची. know, I know. I'm just joking. तो उन्होंने सोचा था चाचा का ढाबा. तो दैट नेम सीकेडी चाचा का ढाबा वाज वेरी पॉपुलर. तो मैंने वहां से उनसे एक चीज सीखी थी कि फर्स्ट आपको एक ऐसी चीज नाम ऐसा सोचना पड़ता है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबल हो. कि अगर चार लोग बैठे हैं तो नाम आप ऐसा बोलो कि उनको याद रहे कि अच्छा अजनबी वो सैलून कुकिंग ऐप था. और आफ्टर अगर सर एक इमेज बन जाती है उसके बाद तो लाइक नेम ही कंटिन्यू होता है. रेपुटेटेड अगर एक इमेज बन जाती है. Right. Uh, okay. No, I mean it's a decent name, but I don't know how much you know it's in alignment with the services that you're trying to provide. It should be ठीक है, unique and different, but at the same time should at least highlight the industry or the services that you're trying to provide as well, right? ओके ओके यस सर. सर. वी विल डेफिनेटली चूज अ टैगलाइन जो प्रॉपर सैलून इंडस्ट्री को करती हो. Okay. थैंक यू सो मच सर. Okay, who wants to go next? Good work, मैम folks. कैन वी लीव. थैंक यू सर. Yeah, थैंक यू yeah, सो you मच. can. थैंक यू. Yeah. थैंक यू. We have FOCS. I can see FOCS. We have Tool Snitch. Tool Snitch, do you want to go next? Yes. I will go we next. can go next. Okay, FOCS, then Tool Snitch, and the rest of you, can you please drop your names in the chat box? FOCS, you can go. Tool Snitch, be ready after FOCS. Sure. Screen shared. We cannot see your screen. Yes, now we can. Just a second. So, hello, sir. This is Dipanshu from FOCS, that stands for the Freelance Outsourcing Community for Students. Basically, in one line, we are redefining how students gain real world experience and business tap into fresh talent of talented students that are in college. And एक अगर आपको बैक स्टोरी पे सर आपको बताऊं तो आई माई सेल्फ डिड फ्रीलांसिंग बैक इन 2021. एंड सर काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता था एज ए स्टूडेंट कि हमें कोई मतलब प्रोजेक्ट ढूंढना है और किसी क्लाइंट के लिए काम करना है. तो लाइक एंड एंट्री टू बैटर फ्रीलांसिंग में थोड़ा टफ है बिकॉज एक बार आपको एक दो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन उसके बाद इश्यूज बहुत आते हैं अपने आप को सस्टेन करने में एंड ग्रो करने में. बिकॉज आपको अपस्किल भी साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करने होते हैं. ऑल्सो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे सच कुछ हेल्प नहीं करते हैं बिकॉज इन मैनी वेज
दोज आर मोस्ट लाइकली जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड अगर आप फाइवर फ्रीलांसिंग पे जाओगे आपको इश्यूज आएंगे प्रोजेक्ट ढूंढने में भी और बिड करने में भी। जिस चीज़ के आप ऐसे अगर मार्केट पे जाओगे तो ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, आपको उसको 10x लेस कॉस्ट में आपको वो प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप एज अ बिजनेस आप काम ढूंढ रहे हो तो फ्रीलांस एक बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रीलांसर ढूंढना भी, एंड उसके साथ फिर उसको वेरीफाई करने की उसका स्किल सेट वही है, एंड उसको बिकॉज कि ही कैन डू द वर्क दैट यू आर असाइनिंग इन हिम, एंड उसके बाद की टाइम पे डिलीवर करे। ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है एक फ्रीलांस मार्केट में। एंड जब आप ऐसे बिजनेस भी जाते हो आपको भी इश्यूज आते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन बनाया है। एंड अगर आप यूजर पर्सोना की बात करें सर, समवन हु इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट जो अभी जिस कॉलेज में आया है, जिसको लगता है कि कोडिंग बहुत अच्छी जॉब है, मतलब एक अच्छी फील्ड है ना, आगे चल के आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, सर टॉप 10% के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो भी नीचे उसके जैसे जैसे परसेंटेज कम होते रहता है, ज़्यादातर एवरेजेस की तरफ हम जाते रहते हैं, Can you इश्यूज तो सबके लिए आते हैं। take this to the presentation mode? ओके सर, let me just do this. Oh, sir, just Just give me a full second. screen, नीचे से full screen कर दो बस. Okay. So, for someone like Ayan, जो 20, I जो can't see 20, anything. I think it's gone to a different screen. I'm sorry. सर फुल स्क्रीन को साइड हो रहा है पता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है. ऐसे बेटर है। या ठीक है. Works. So, sir, someone who is a 20-year-old studying in an engineering college और उसको लगता है कि वो 22 ईयर्स पे जॉब ले सकता है जब अपने फोर्थ ईयर में आ जाए, तब उसके पास सर स्किल्स उस लेवल से डेवलप नहीं हो पाती जिस लेवल से वो सोचता है कि फर्स्ट ईयर में कर सकता है। बेसिकली अगर उसको 4 प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं तो वो 2 प्रोजेक्ट से उस लेवल के बना पाता है और आगे चल के नेगोशिएट भी नहीं कर पाता जॉब के टाइम पे कि उसको किस लेवल की जॉब्स चाहिए। एंड अगर वो उसी टाइम पे पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करना चाहे कॉलेज में तो एक बहुत इशू आता है उनको स्टार्ट करने में, बिकॉज स्किल सेट का एक इशू रहेगा। आप इंटर्नशिप ढूंढ लोगे लेकिन वो ज़्यादातर लाइक लेबर टाइप की ज़्यादा हो सकती है कि आपको ज़्यादा काम कराना कराएंगे और उसमें आपको जो चीज़ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपोजर के लिए आप गए थे वो होता नहीं है। सिमिलरली सर, अगर हम किसी एक एजेंसी ओनर की बात करें या फिर मार्केटिंग मैनेजर की बात करें जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी है, काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी सर इशू आता है कि एक प्रॉपर स्टूडेंट इंटर्न को या फिर एक फ्रीलांसर इंटर्न को भी उनको हायर करना थोड़ा इशू रहेगा। बिकॉज इनको जब भी काम कराना होता है सर, पहले तो उनको एक 0 से 1 पे उनको लेके आना पड़ेगा, एंड दैट्स द मेन थिंग कि उनको सिखाना कैसे है। उसमें उनका काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है और उनका खुद की भी एनर्जी ट्रेन होती है कि उनको चीज़ें करानी कैसी है, एंड दैट्स द मार्केट वी आर टारगेटिंग, दैट इज स्टूडेंट फ्रीलांसिंग। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है 1.9 ट्रिलियन डॉलर की है। बट अगर हम जस्ट स्टूडेंट फ्रीलांसिंग की बात करें जिसमें प्लेटफॉर्म का बहुत कम है, तो वो दैट विल बी अराउंड $12 बिलियन। एंड जब अगर हम मार्केट रिसर्च की बात करें, मार्केट शेयर्स की कि किस कैटेगरी में कैसे काम होता है, सर कंटेंट क्रिएशन में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रीलांसर एम्प्लॉयड है। एज इन की जो भी हम जितना भी हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखेंगे सबसे ज़्यादा एडिट दैट इज एडिटेड बाय 18-20 और टीनेजर्स जो सबसे ज़्यादा उसमें काम करते हैं। सेम सर टेक्नोलॉजी में भी होता है कि जो भी फर्स्ट ट्वेल्थ जिसने 10th 11th 12th से कोडिंग स्टार्ट कर दिया है, दैट दे गेन अ गुड ट्रैक्शन कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक आते आते काफ़ी काम सीख जाते हैं एंड वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ये इशू बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आता है। बट अगर हम जैसे कि ऐसे आप कुछ फैक्ट की बात करें तो पेपाल जैसे कि फ्रीलांसर्स 58% ऑफ फ्रीलांसर हैव अ डिले इन पेमेंट और उनको इशू आता है कि कभी भी पेमेंट लेने में। सेम चीज़ सर मिस इंटरप्रिटेशन और काफ़ी लेवल्स पे होती है बिजनेस के बीच में, फ्रीलांसर्स के बीच में भी, एंड उस चक्कर में दिस दिस गैप कम्स। एंड इसका सर फंडामेंटल इशू भी था, तो दैट एंड इसका एक फंडामेंटल इशू है, एंड दैट इज बिकॉज दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। दोनों के बीच में एक स्कोप ऑफ वर्कशीट कभी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिसाइडेड नहीं होता, एंड दे जस्ट कम टू नो अबाउट ईच अदर किसी के थ्रू, या तो वर्ड ऑफ माउथ या तो किसी कम्युनिटी या फिर किसी प्लेटफॉर्म एज इन लिंक्डइन या बाकी के थ्रू व्हेन यू रीच समवन एंड अप्रोच देम। तो उस अकॉर्डिंग आपको मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है और आपको काम करने के चांसेस मिलते हैं। बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अर्न भी जहाँ पे आप लर्न भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। एंड उसके लिए हमने सर फोक्स बनाया है। फोक्स का मेन प्लेटफॉर्म से क्रिप.ए है जहाँ के थ्रू बिजनेसेस फ्रीलांसर ले सकते हैं। दैट विल बी मैच लाइक अब अर्बन कैब जैसे मैच होता है वहाँ पे फ्रीलांसर, वहाँ पे कोई आप चूज नहीं करते, ऑप्शन नहीं करते, ऑप्शन का पार्ट नहीं बनते कि आपको बिड करके आपको चूज करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली
अपने आप को लिस्ट कर सकता है ऐसा फील, मतलब आप हमारे स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ सकते हो, हम आपको ट्रेन करेंगे 0 to 1 में। एंड उसके बाद जब आप कुछ लेवल पे आ जाते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर सकते हो सर। प्लेटफॉर्म विल बी टोटली सर, आई विल शो योर वीडियो, प्लीज लेट मी नो अगर विजिबल है। सर विजिबल है ना ये? Yes, it's हाँ visible, but there is no sound. हाँ, no problem sir, I will narrate. So basically this platform is for businesses and others who want to take up freelancers and get their work done. उनके लिए प्लेटफॉर्म है बेसिकली अभी के लिए जो हमने डिजाइन किया है। इट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट पार्ट, इट इज ओनली फॉर द बिजनेस पार्ट। एंड इसमें बेसिकली सर प्रॉपर एआई यूज होगा, बिकॉज हमें इसको काफी लेवल पे हमें स्कोप ऑफ वर्कशीट खुद से बनानी है। एंड हम प्रॉपर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं एक बिजनेस के लिए। इट विल नॉट जस्ट भी कि हमें किसी को मैच करवा रहे हैं एंड उनका जस्ट वहाँ पे हमारा काम खत्म है। इट विल बी एंड टू एंड कि हम उनको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ साथ हेल्प कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने में भी कि चीज़ें हो कैसे रही है। थ्रू टेम्पलेट्स एंड क्वेश्चन सर हम अपनी स्कोप ऑफ वर्कशीट बना सकते हैं। एंड जैसे जैसे चीज़ें बनेगी देयर विल बी एस्टिमेटेड टाइम एंड उसकी डिलीवरी, एक सेकंड, एस्टिमेटेड टाइम और प्राइसेस एंड सब कुछ डिसाइड हो सकता है यहीं पे। एंड सिंस हमने एक स्कोप ऑफ वर्कशीट खुद से बना लिया, जो बाकी प्लेटफॉर्म में इशू आता है कि फ्रीलांसर डिसअपीयर हो सकते हैं या फिर उनको अगर आता नहीं हो गायब भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हम हटा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज हम सारी चीज़ें यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट ट्रैकर भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर हम अमेजोन पे अपनी शिपमेंट ट्रैक करते हैं, हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते हैं थ्रू वेरियस चेक्स एंड वेरियस स्टेप्स जो इसमें हम बीच में इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने स्कोप ऑफ वर्क के बेसिस पे। एंड उसके थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा। फॉर बिजनेस साइड उनको प्रॉपर एक मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर मिल सकता है कि उनको जो भी हेल्प होगी, इफ़ दे हैव एनी इशू और दे हैव एनी प्रॉब्लम, तो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं एंड उसके थ्रू सारी चीज़ें अपने सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर बिजनेस पार्ट सर ये सॉल्यूशन था। सर स्टूडेंट पार्ट पे हमारा बेसिकली ये है कि हम ट्रेन उन लोगों को कर रहे हैं जिनको एटलीस्ट लैंग्वेज पता है या फिर जिनको एटलीस्ट चीज़ें पता है कि चीज़ें चलती कैसी है। हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड उन्हीं स्टूडेंट्स को हम आगे मेंटर करके हम उन्हें 0 to 1 ला सकते हैं सर 1 से 6 मंथ्स के पीरियड में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फील्ड्स विल बी सर टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग दैट वी आर टारगेटिंग। कंटेंट क्रिएशन से we have already started because that helped us with maintaining a position and थोड़ा हमें मार्केट में एंटर करने के लिए हमें उसने हेल्प करी। एंड आगे उसी ट्रैक्शन के बेसिस पे हम सर एआई एंड टेक में भी घुसेंगे एंड उसमें हम आगे चल के ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा काम ढूंढ सकते हैं एंड चीज़ें बना सकते हैं। सर लेवल 1 बेस्ट बॉट हमारा ऑलमोस्ट लाइव है। अगर आप अभी जाओगे तो उस पे हम आप प्रॉपर हम आपकी स्कोप ऑफ वर्कशीट के साथ साथ आपको वहाँ पे प्रोडक्टाइज सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। आपको जैसे SaaS प्रोडक्ट्स होते हैं कि स्मॉल मीडियम और लार्ज आप चूज कर सकते हो आपको किस टाइप का पैकेज चाहिए, हम उस टाइप से अभी चल रहे हैं। बिकॉज इसके लिए काफ़ी थोड़ा एआई हमें डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमने उसको आगे के लिए काफ़ी स्केड्यूल करा है। दैट विल टेक एटलीस्ट 6 months फॉर अस राइट नाउ। एंड फॉर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड फीचर्स इफ वी टॉक अबाउट scope of work that is missing throughout the platforms and other networking site, तो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सर एक फीचर है जो स्कोप ऑफ वर्क के बाद ही एनेबल हो सकता है। माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट है जो हो सकती है बट नॉट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। तो इससे और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो लीकेज होती है फ्रीलांसर्स की प्लेटफॉर्म से, अगर आप फ्रीलांसर अपवर्क से ढूंढोगे या फाइवर से ढूंढोगे तो दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड उसके बाद वो लेग शिफ्ट हो सकता है प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म के पास पेमेंट नहीं आएंगे, तो वो इश्यूज भी यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं थ्रू दिस मेथड। अगर हम प्रोजेक्ट से कंपटीशन की बात करें, अपवर्क, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, हम सब इनको अपना कंपटीशन कंसिडर करते हैं। एंड सेम इशू सिर्फ वही है कि स्कोप ऑफ वर्कशीट कहीं पे भी डिसाइड नहीं है कि काम करना क्या एग्जैक्ट, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी सेम चीज़ है। एआई पावर्ड फ्रीलांस मैचिंग से दैट रेफर्स टू कि हम आपको जैसे जैसे आपकी स्कोप ऑफ वर्कशीट बनी है उस अकॉर्डिंग ही आपके पास एक फ्रीलांसर असाइन हो रहा है जिसको हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन या फिर कोई इशू नहीं आएगा कभी भी काम को कैसे कराना है और कैसे होना है उस चीज़ में। एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से वही प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड उन सब के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। एंड सिंस दीज प्लेटफॉर्म्स अपने आप में एक नेटवर्किंग साइट से या फिर जैसे एक जॉब पोस्टिंग मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे इशू आएगा कि वो स्टूडेंट मेंटरशिप और उनमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, वेर एज फोक्स कर सकता है। नाउ बिजनेस मॉडल की अगर से, तो व्हेन वी कम टू बिजनेस मॉडल, तो जॉइनिंग फीस और सर्विस फीस एंड SaaS टूल सर, SaaS इज फॉर एजेंसीज बिकॉज हम खुद से बहुत सारी निश में नहीं जा सकते। वी विल नीड आवर पार्टनर्स कि उनको हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ अपने स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाट इज SaaS इज। सो मार्केटिंग गोल सर आपको मैं थोड़ा बता दूँ तो वी आर राइट नाउ डूइंग ब्रांड अवेयरनेस
हम लीड्स तो ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, हम लाइक फरवरी से एक्टिव है एंड तब से हम $5,000 के अराउंड कर चुके हैं एज अ सर्विस ओनली। प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं करा है, प्लेटफॉर्म से वी हैव डन वेरी मिनिमल बिकॉज हमें भी थोड़ा फोकस सर्विसेज पे ज़्यादा था, ताकि हम अपने जो कोर्सेज आगे चल के हम बनाने वाले हैं उस पर अपना ज़्यादा फोकस कर सकें। सो उसी अकॉर्डिंग से सेल्स हमारा एक मेजर मेट्रिक है अभी के लिए कि हम क्या कैसे कर रहे हैं एंड वही चीज़ की कन्वर्ट कितना कर पा रहे हैं जितनी भी लीड्स आ रही है। प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी सर, सिंस हमारा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, लाइव होने वाला है एक दिन में। उसके अलावा हमारे की चैनल्स जो है हमारा इन सोशल मीडिया सबसे मेन है फिलहाल के लिए। वी आर बिल्डिंग आवर ओन कम्युनिटी ऑन दीज चैनल्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड हम उनके थ्रू अपने ब्रांड थोड़ा बड़ा करेंगे स्टार्टिंग से ही। दैट विल बी स्टार्टेड वेरी सून। ऑल्दो ऑल्सो वी हैव सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो मैं आपको कुछ पोस्ट वगैरह दिखा सकता हूँ। दिस वॉज सम कॉन्टेंट दैट वी हैव बिल्ड ऑलरेडी, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आई गेस यू वोंट बी एबल टू हियर इट, बस यस, कि हम ऑलरेडी कैसी सर्विस दे सकते हैं आपको एंड किस चीज़ की चीज़ आपको चाहिए होगी। तो ये ऑल्सो एड्स की तरह भी हम इसको यूज़ करने वाले हैं आगे चल के परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वेरी सुन। एंड यही चीज़ें हैं कि हम इनको कैसे आगे दिखा सकते हैं, उस चीज़ पे हमारा काम ज़्यादा चल रहा है अभी। सर ऑल्सो की मेट्रिसेस सही है, सोशल मीडिया मेट्रिसेस की लाइक अभी हम ट्रैक कर रहे हैं जितने भी हमारे 2 पेजेस हमने स्टार्ट किए थे कि उस पर कैसे इंगेजमेंट आ रही है। सिंस वो थोड़े और पुराने पेजेस भी है तो डैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस कि हम उसको अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हैं, चीज़ें पता कर पा रहे हैं। सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग थोड़ा स्टार्ट करने वाले हैं सिंस वी हैव ऑल्सो सम फॉलोअर्स ऑन आवर मेन पेज जो हमारे हमसे एसोसिएटेड है, हमारे एम्बेसडर टाइप्स है। तो हम उनके साथ भी कोलैब करके और प्रॉपर इसको ऐसा एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट करके ऐसा कैंपेन स्टार्ट करके अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक लेवल पे स्टार्ट करेंगे, ताकि वी हैव एन आइडिया कि कैसे टेस्ट हो रहा है और कैसे चीज़ें चलती हैं। सेम चीज़ है सेल्स पे हमारा काफ़ी ध्यान है अभी सी, सिंस हम खुद से सर्विस दे रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू लर्न द बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग की हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट वाज फोकस। Good, yeah, very good. I think the idea is very interesting. I kind of like where you're taking this and where you're coming from. So I think एक दो चीजें I'm generally kind of going to recommend you. Definitely. So first is I think uh, when you did mention categories of what kind of freelancers you'll provide. Yes, sir. Are you going to also train these Yes, sir. So people main as well? Because yes sir, that thing is the main essential part of this ecosystem because सर हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक कोई स्क्रैच से है हम उसको स्टार्ट से सिखा रहे हैं। दैट इज समथिंग कि सर अगर कोई 0.2 पे है तो हम उसको 1 तक लेके जा सकते हैं। वो पार्ट ज़्यादा इजी है कि उनको स्क्रैच से सिखाने से ज़्यादा, तो उस अकॉर्डिंग ही हम कोर्सेज बना सकते हैं एंड उनको हम फिर अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। yeah, so I think thinking about that, the component of getting skilled freelancers to people who are professionals, either startups or bigger organizations, could potentially hire these freelancers. Yes sir. Now, there are other sort of moving parts behind the scenes, which I felt you can think about in terms of if this is meant for a college student who's 20-year-old, Okay. what will be the liabilities for that individual for his or her exams, his or her other extracurricular activities, and whatnot. Yes So I think going into those details is going to add a lot of value to this. How can you still make this a workable solution for them? yes Is sir. it the money? Is it the learning? Is it the brand? What is it? Um, Also, I think uh, you did talk about your marketing strategy, but again, and this goes for everybody, we don't see too many numbers. आपने KRA दिखाया उसमें एक लाइन में भी नंबर नहीं थे. The last सर वैसे the फाइनेंशियल last line हाईलाइट that मैंने you showed. बिजनेस I में mean, डाला you था। but again, everything has to be very tangible, very quantitative. The more quantities you have, the better. Your action plan will be great. But overall, I think it's a good idea. Understand your competitors a little bit more. Like, why can't I just be on a Upwork versus being on folks? Yes sir.
sound is like the name is good. It sounds good. Um, how do you also strengthen your relationships with businesses is another big element that I felt you can do more work on. If you have Yes. companies like Facebook, Google, Mm-hmm. KPMG, whatever, JP Morgan, whatever, if Mm-hmm. you can get some of those people to get a buy-in, that you are definitely having a platform which can provide them really talented freelancers, it'll go a Yes. long way. So focus, I think, more on how do you build the other side of the marketplace. Yes, Uh, sir. जिसका जिक्र थोड़ा सा कम था यहाँ पे. I think Mm-hmm. you can add a little bit more. But I think overall, good idea. I feel it has some potential, but again, it really depends on how do you uh, solve both sides of the puzzle, not just one. Yes, sir. Okay. Do you have any questions overall for me? सर मेन चीज़ है मार्केटिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑल्दो वी डोंट हैव मच बजट बट स्टिल वी वांट टू गो फर्दर विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग एट दिस स्टेज ओनली कि हम वहीं से ट्राई करना चाहते हैं अभी स्टेज पे चाहे बजट उतना नहीं है बट लेट्स सी कि कैसे जाता है तो इज इट द गुड अप्रोच या फिर हम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जैसे रेफरल आ रहे हैं उसी के साथ पहले अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर ले तभी सब कुछ स्टार्ट करें मार्केटिंग में. No, I think you can always, so again, depends on if you have any budget or not. हम्म. But you can actually start with performance marketing if it is going to help you get more people trained, let's say. Yes, You sir. want to get to strengthen the product. हम्म. For the B2B, you will have to do some legwork. For like, I was sharing this last time as well. For B2B B2B, you have to make sure that you're going and visiting these हम्म. firms. You're making sure that the product in for them is not the platform, is the people on the platform. ओके So सर. how is the product good enough for the corporate customer? यस That सर. that in itself is going to be like a big win if you can achieve that. So I think think in those lines, and you'll be able to then make that decision better. डेफिनेटली सर. थैंक यू. But good, I like it. थैंक यू सर. सर मार्क्स. अच्छा marks में बताया था आपको. So I'm giving you 3 for your problem statement, 3 on 5. I'm giving you market analysis 3.5 on 5. User persona 3.5 on 5. Overall strategy 4 on 5. And content 3 on 5. ओके सर. थैंक यू सर. Yeah. All right. थैंक यू सर. Next we have Hello, sir. Next is tool snitch. Who's next? I'm Can I sorry. start? we couldn't hear Tool you. snitch, tool snitch. Yeah. Can you hear me now? Yes. I mean, the voice is muffled, but I can definitely hear you. Okay, just give me 1 second. Is it clear now? Yes, better. Okay, let me present my PPT. Actually, I have two PPTs. That's First okay. one is our pitch deck, and second one is specifically for the marketing purpose. Because it was prepared by Yash, who is handling the marketing for ToolSnitch right now. Okay. Screen is visible, right? Is my screen visible? Yes. Okay. Okay, so this is Team ToolSnitch, and this is the name of our brand also. So ToolSnitch, like इसका आइडिया बहुत मतलब लाइक जब हम आइडिया सोच रहे थे व्हेन वी आर फाइंडिंग कि भाई हमें क्या बिल्ड करना है,
देन जो ओरिजिनल आइडिया था हमारा वो था that we will buy the scrap from the PSUs like railways, and then we will sell it. We will become the mediator for that. Okay. And from that, I got the idea that there's a gap in the market of repair sector, as because my father is in repair sector. Like my father repairs televisions, Okay. and so I had idea of repair sector from that way. So what we found out, what I found out personally is that अगर आप सर्विस सेंटर्स पे जाना चाहते हो, लाइक अगर आपका फोन खराब हो जाता है, इफ आप अगर आपका फोन खराब हो जाएगा, देन आप कहीं पे भी जाओ, anywhere you go, you have only three options. First is service center, second is local repair shop, and third one is some online small businesses जो आपके घर पे आके ठीक करके चल जाते हैं. सो सर्विस सेंटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत दूर है. लाइक अगर मैं मोटरोला की स्पेसिफिकली बात करूं, देन एक द्वारका मोड़ में है, एक साकेत में है, एंड देन वन इज इन गुड़गांव. दिस इज अबाउट होल पूरी दिल्ली में सिर्फ 3 है जो ऑफिशियल है. सो एंड अगर मैं रिपेयर शॉप्स के लिए जाता हूँ, देन ओके, या सर्विस सेंटर्स के प्लस पॉइंट ये हैं कि वहाँ पे आपका काम श्योर है कि आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, बट वो बहुत दूर है. हाँ, बट लोकल जो रिपेयर शॉप्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ से रिपेयर कराऊं, एंड उसको ढूंढने में आपके 2 से 3 दिन लगते हैं. एंड सो here's we want to come into the picture. We want to build a ecosystem in this repair sector जहाँ पे हमारे पास हमारी शॉप्स इतने डिस्टेंस पे ना हो कि या तो गुड़गांव या तो फिर द्वारका मोड़ इतना ज्यादा डिस्टेंस की लाइक 2 से 3 आवर्स का ट्रैवल करना पड़े आपको तुम्हारे लैपटॉप ठीक कराने के लिए. सेकेंड थिंग, वी वांट टू गिव लाइक स्पेयर पार्ट जो क्वालिटी हो. लोकल रिपेयर शॉप्स के लोग आप कहीं से भी लो, क्वालिटी मिलना चाहिए कस्टमर को. एंड देन इसके बाद एक जो रिपेयर शॉप्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि रिपेयर शॉप्स वाले कभी भी वारंटी नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पीछे से वारंटी नहीं मिलती है. सो वी वांट टू गिव देम कि भाई हम उनको स्पेयर पार्ट्स भी देना चाहते हैं. वी वांट टू प्रोवाइड देम स्पेयर पार्ट्स आल्सो ताकि उन्हें वारंटी भी दे पाए एंड कस्टमर का रिटेंशन, कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन हो पाए. दिस इज टू स्टेज ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स सेक्टर convenient, transparent, reliable, and door-to-door service. Okay. So these are the problems जो कि मतलब मैंने मेंशन करी अभी. एंड ये 4 पिलर्स हैं जो हमारे रहने वाले हैं. फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिपेयर सेंटर नेटवर्क. लाइक जैसे मैंने बोला कि भाई रिपेयर सेंटर्स बहुत कम है, लोकल्स बहुत ज्यादा है, बट जो ऑफिशियल हैं जहाँ पे आप लाइक आप एक एज अ ब्रांड ट्रस्ट कर पाओ वो बहुत कम है. तो आई वांट टू इंक्रीज दैट नंबर. कि जैसे द्वारका मोड़ है, लाइक आई लिव इन द्वारका मोड़ एक्चुअली. सो जैसे द्वारका मोड़ है, सो द्वारका मोड़ के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ द्वारका मोड़ में जो टूल्स निच का सेंटर होगा वहां पे जाएं. उसके बाद अगर उत्तम नगर है तो उत्तम नगर में जो एक सेंटर होगा उत्तम नगर के लोग वहां पे जाएं ताकि उन्हें ज्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े. एंड देन वी हैव डे टू डे सर्विस ताकि अगर लाइक जैसे इफ समवन इज फ्रॉम अ ऑफिस पर्सन एंड उसका लैपटॉप खराब हो जाता है, अब भाई उसके पास लाइक बिकॉज कई बार आपके पास टाइम नहीं होता कि आप बाहर जा पाओ. सम पीपल आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास टाइम नहीं मिल पाता कभी. सो हम अगर आप चाहो तो वी कैन रिपेयर योर डिवाइस एट योर होम ऑल्सो. Okay. आफ्टर दैट सीमलेस इंटीग्रेशन रिलायबिलिटी. सो बेसिकली हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करेंगे. फर्स्ट, reliability that people can rely on us, shopkeepers can rely on us, and then partners. हमारे पार्टनर्स कौन कौन होंगे, लाइक OEMs. OEMs होंगे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे, HP, Dell. We want to partner with them. Actually, right now we are exploring the ways to partner with them. And these 4 are our services which we are providing.
expert consultation is just a free thing, because sometimes क्या होता है कि like जैसे अभी हमें build करना है अपना market, because we are the very new in this, so हमें अपना नाम भी चाहिए. First we need to build a brand, then we can like ask people to pay for like as a brand. So for that, what we will do, like these three are main services, like marketplace for repair centers, express repair services, on the spot repairs. But this expert consultation is something like we can offer it for free. Like आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें कौन सा पार्ट खराब है, क्या चीज खराब है, जस्ट book a consultation with us. We will tell you कि भाई अगर ये इश्यूज हैं आपके लैपटॉप में, देन ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जो खराब हो सकते हैं, एंड इन पार्ट्स के प्राइसेस ये है, इतने में लेबर कॉस्ट मिला के आपको इतने का पड़ना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी शॉप पे जाके आपके पास एक एम्पावरमेंट आएगा कस्टमर के पास, ताकि वो नेगोशिएशन कर पाए. देन दिस इज द साइज ऑफ मार्केट, लाइक जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इंडिया की है, वो 1.6 बिलियन डॉलर्स की है. एंड जो हमारे लिए सर्विसेबल है वो है 1.12 बिलियन डॉलर्स. एंड जो हम कैप्चर करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू कैप्चर, इज 56 मिलियन डॉलर्स ऑफ मार्केट. और ये कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक जैसे अर्बन कंपनी. अर्बन कंपनी इज नॉट द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, मतलब ओके, लाइक जैसे एक्चुअली हमारा कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी है नहीं मार्केट में जो कि इस लेवल पे हो. कैशिफाई करता है, बट कैशिफाई फोन बाय करता है, वो रिपेयर नहीं करता. हाँ, बट फ्लिपकार्ट का एक यंत्रा है जो कि फोन रिपेयर करके देता है आपको. एंड यांत्रा इज अभी काफी लो प्रोफाइल में है. आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स इन लो प्रोफाइल. इट इज बैक्ड बाय फ्लिपकार्ट. Okay. देन दीज आर माय की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ. आई वांट टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, वेरिफिकेशन, स्केलेबिलिटी विद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. लाइक जैसे जो स्मॉल शॉप ओनर्स होते हैं, उनके पास एक इशू रहता है कि उनको पार्ट्स हमेशा किसी होलसेलर से या फिर लाइक जैसे अभी क्या है, अभी जैसे नवादा है तो वहाँ पे होलसेलर्स काफ़ी हैं इस चीज़ के, तो आसपास के सारे शॉप ओनर्स वहीं से सामान मंगाते हैं. तो काइंड ऑफ नवादा में मोनोपोली है कि भाई वहां से अगर किसी ने मना कर दिया किसी शॉप ओनर को, तो उसको सामान नहीं मिल पाएगा. या फिर अगर सब को एक ही प्राइस रखना पड़ेगा, या फिर कोई सर्विस, मतलब लाइक अगर नवादा वाले डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस पे नहीं देंगे वारंटी, देन वारंटी नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज दे हैव द मोनोपोली. स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, एज आप कहीं भी जाओ आपको हर जगह यही मिलेगा कि भाई लोकल शॉप है. तो अगर आप उस पर्टिकुलर शॉप पे आओगे, जैसे व्हाट आई मीन बाय इकोसिस्टम इज कि अगर मैंने दिल्ली में जनकपुरी में रिपेयर कराया, ओके, नाउ आई वर्क इन नोएडा, एंड मेरे को वो नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस में इशू आता है नोएडा के अंदर. तो अगर कोई भी दो शॉप्स है, अगर मैंने जनकपुरी में टूल्स निट की शॉप से रिपेयर करवाया था, then I can get it fixed again under the warranty from the shop in Noida, which is under Toolsnitch. So I meant this by ecosystem. What we see as a big picture. And this would be a revenue model, like for the shop owners, actually yesterday we had a meet with Kaushik sir, and we are working on this from shop, the shop owners wala part. But yeah, customers wala is fixed कि इनको ये सब सारी चीजें फीचर्स मिलेंगे, एवरीथिंग इज देयर. एंड बट कस्टमर से वी विल नॉट चार्ज एज मच एज, मतलब कस्टमर से हमें मिनिमम चार्जेस रखने हैं अपने लिए. उनसे हमें सिर्फ लाइक अगर वो बुकिंग कर रहे हैं तो बस हमने सिर्फ 10 रुपए एक एज अ कन्वीनियंस फी ले लिया, नो परसेंटेज बेसिस पे नहीं, सिर्फ 10 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट. एंड लाइक वी वांट टू, लाइक शॉप ओनर्स के साथ वी आर फाइंडिंग आउट कि इनके लिए वी लाइक actually we have decided, almost decided कि we wanted to go for a franchisee model for shop owners, so that we can bind them under our laws, under our bylaws.
विच वी विल डिसाइड कि भाई पेमेंट आती है तो कैसे आएगी, अगर किसी का पार्ट खराब होता है तो उसके एसओपीज हम डिसाइड कर पाए, बिकॉज वी डोंट वांट दैट कि भाई आपने हमने पार्ट दिया आपको और आपने कस्टमर को उसकी जगह कोई दूसरा पार्ट लगा के दे दिया. Then okay, this is use of funds. This is a different slide. Okay, I want to skip this. And this is my core team, Shreyansh and Anshul and me. We are the core team of this. So this is about the what we are building and what our vision here. So I want to Yash to present the marketing PPT and tell that what are how we wanted to build a marketing and how we are planning to establish us as a brand. Okay, from here I'll continue. Am I audible? Yes, you are. Thank you. Is my screen visible? Yes, now it is. Okay, sir. So from here now on, I'll be explaining marketing campaign of Niche. तो मेन इशू है जो इंडिया में ना हमारी सारी चीज़ें जुगाड़ पे चल रही है. इंडियंस को जुगाड़ बहुत पसंद है, तो वी आर गोना रन अ कैंपेन नो मोर जुगाड़. क्योंकि जुगाड़ से हो क्या रहा है, हम चीज़ें घर पे ठीक करें, कुछ भी जुगाड़ लगा रहे टेम्परेरीली फिक्स हो जाती है और कॉस्ट आती है, और जितनी बार आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो उतनी बार हम उसकी क्वालिटी ख़राब करते हैं. तो कमिंग टू द कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स कि हम उससे अपने कैंपेन में क्या क्या चाह रहे हैं नो मोर जुगाड़ से. फर्स्ट थिंग इज वी वांट टू एस्टैब्लिश इन मार्केट कि लोगों को पता हो देयर इज समथिंग एग्जिस्ट एज टू स्निच, कि टू स्निच है, एक ट्रस्टेड नेम है. हम टू स्निच के पास जाएंगे, विल गेट अ लॉन्ग टर्म रिपेयर की जो हमने ठीक करा वे चलेगा टाइम तक. ऐसा नहीं है आज रिपेयर कराया कल खराब हो जाएगा. वी वांट दैट रिलायबिलिटी ऑन अस. ऑल्सो जो हमारा नेटवर्क है उसके थ्रू हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाएंगे कि आपको कहाँ से ठीक कराना है. एंड जितना कम ठीक होता है कोई भी डिवाइस, क्योंकि आप भी मानेंगे अगर आप एक ही चीज़ को 4 बार ठीक 5 बार ठीक करा रहे हो तो उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है उसको खोलने बंद करने में एंड चीज़ों में. तो एक बार लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कराना प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ डिवाइस. ओके. अब ऑल्सो जो अभी हमने एक्सप्लेन करा कि हम चाह रहे हैं कि एक नेटवर्क बने, एक इकोसिस्टम बने इस चीज़ का, क्योंकि अभी कोई और इकोसिस्टम है भी नहीं. तो वी वांट कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए हमारे तक रीच करने के लिए. देयर इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि हम ज़्यादा किसी को मेहनत ना करनी पड़े, हैसल ना हो. यू कैन जस्ट कम ऑन अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म एंड चेक, एंड आपको ज़रूरत भी नहीं विजिट करने की शॉप को, आप D2D सर्विस ले लो. ऑल्सो एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के थ्रू हम ग्रेटर अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं. ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट कि जैसे अब हम जैसे ब्रांड है, अब हमारे पास लोग आना क्यों चाहेंगे. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्याण ज्वेलर्स. जब वो 1990s में आए थे तो उनके पास भी कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या हुआ था कि सबको अपने अपने ज्वेलर से ही गोल्ड लेना था. हमारे भी टू बी फ्रैंक कि मेरे भी हमारे भी घर पे एक पर्सनल ज्वेलर्स थे जो जिनके पास हम जाते थे हर बार. तो कल्याण ज्वेलर्स चल नहीं पा रहा था. तो व्हाट दे डिड डिफरेंट कि उन्होंने अपनी हर शॉप पे ना एक प्योरिटी टेस्टिंग वाली मशीन रखवा दी कि आप हमारी शॉप पे आओ, फ्री में चेक कराओ कि आपका गोल्ड कितना प्योर है कितना नहीं है, और बस मेकिंग चार्जेस दे के आप उसके जो इम्प्योरिटी है वो भी निकलवा लो. तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट लोगों को अट्रैक्शन मिली कि आपको उस ब्रांड तक जाना है. सेकंड, जो लोकल मार्केट वाले थे वो थोड़े से एक्सपोज हो गए, तो लोगों के लिए शिफ्ट करना आसान हुआ. सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग एक्सप्लोर दिस एंगल कि वी फाइंड समथिंग लाइक दिस कि लोगों को हमारे ब्रांड पे शिफ्ट करना आसान हो, एकदम अब्रप्ट ना हो कि क्योंकि कोई जल्दी से आना नहीं चाहेगा. तो वी आर समथिंग ट्राइंग टू फाइंड लाइक दैट. ओके. ऑल्सो हम इस ब्रांड कैंपेन के थ्रू अपनी शॉप्स को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रांड ला रहे हैं तो शॉप्स और कस्टमर दोनों के लिए लाना है. तो शॉप्स को क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है. शॉप्स के लिए ये इस तरह से भी अच्छा है कि हम उनको एक एज अ CRM हेल्प कर रहे हैं. क्योंकि मान लो कोई उनके पास एक लोकल कस्टमर आया एंड देन उनका डिवाइस ठीक होने में टाइम लग गया थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैक्स टू मैक्स एक शॉपकीपर के पास कितने कस्टमर आ जाते हैं तो आप कितने टाइम तक याद रख लोगे एक चीज़, 2 दिन 4 दिन मैक्स एक हफ्ता कि आप भैया सर एक हफ्ते पहले आए थे हमारे पास, आप ये बात करके गए थे. तो अगर उससे ज़्यादा टाइम होता है, वैसे तो चीज़ें अभी भी दिक्कत कर देती है शॉप ओनर को, तो उसके लिए हम एक पूरा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि ताकि शॉप ओनर्स को याद रहे, हेल्प हो कि उन्होंने कस्टमर से क्या बात हुई है, कैसे रहना है, सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे सेव्ड है. Yeah. ऑल्सो अभी हमने लेटेस्टली 100 to 150 शॉप्स का पर्सनली जाके इंटरव्यू लिया है. तो व्हाट वी फाइंड दैट कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कोट करा, 90% ऑफ देम वारंटी नहीं दे रहे. क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें नहीं मिल रही. तो वी आर ऑल्सो लाइक ट्राइंग टू पार्टनरशिप विद OEM ताकि हमको रिपेयर पार्ट्स मिले, हम उनको सस्ते में रिपेयर पार्ट्स दे पाएँ एंड
वो हमसे रिपेयर पार्ट्स लेके आगे ढंग से रिपेयर पार्ट्स जो ओरिजिनल रिपेयर पार्ट्स हैं उनके थ्रू ही सर्विसेज दें ताकि सर्विसेज अच्छी हों। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम कैंपेन के थ्रू करना चाह रहे हैं। नाउ कमिंग टू कंटेंट क्रिएशन के हम ऑनलाइन कंटेंट कैसा लाएंगे, क्योंकि द बेस्ट प्लेस टू क्रिएट अ Can I Yes. pause you for just 1 minute? Yes, sir. Yes, sir. And I just need a minute to come back. Mhm. Sorry to cut you off, but मुझे 5 मिनट दीजिए. I'll just quickly come back. Okay? Apologies. Sure. Okay. Yeah, No no issues. Sure. Apologies, I needed a bio break. We can get started now. Okay, so am I audible abhi? Clear and screen visible? Yes, the screen is visible. You're audible. ओके सर, थैंक यू सर। तो चलना अभी हमने बस एक्सप्लेन करा कि कैसे हम स्किप द जुगाड़ का कैंपेन लॉन्च करेंगे एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर कस्टमर एंड शॉपकीपर्स, हम कैंपेन के थ्रू क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाह रहे हैं। नाउ कमिंग टू हम अपना कैंपेन कैसे रन करेंगे या फिर कहाँ पे। तो ऑनलाइन कैंपेन में व्हाट वी आर थिंकिंग इज ह्यूमरस सोशल मीडिया एड्स, क्योंकि एक जनरल एड प्रेजेंट करना जो लोग जनरली स्किप करना पसंद करेंगे, से बेटर है एक ऐसी एड प्रेजेंट करो जो इंगेजिंग हो, कस्टमर आके उस पर रुके एंड उसको पूरा देख के जाए।
So first thing we are planning is we should have a ad जहाँ पे लोग आए, who can recognize us as tool snitch. Okay. Then second thing what we are going to do is have some hashtag campaigns online की skip the जुगाड़ या फिर hassle free services, something like this कि उनको जहाँ पे हमको ऑप्शन अवेलेबल हो हम अपना हैशटैग छोड़ पाए कि this is tool snitch, you should come to us. Now थर्ड थिंग इज दिस इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप. ऑल्दो आज की डेट में सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर डोंट रियली यूज सच थिंग्स, बट स्टिल उनका अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा है. इफ अ इन्फ्लुएंसर से समथिंग और प्रमोट समथिंग, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड सो वी आर गोइंग टू डू दैट टू. हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप करेंगे एंड आस्क देम टू प्रमोट अस. ऑल्सो वन वे टू एडवर्टाइज और कैंपेन इज कि हमें बस चीज़ें बोलते नहीं रहना है, वी नीड टू एंगेज देम, उनसे सुनना भी है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, और वो हमारे पास आके रुके, बस ऐसे बोर ना हो जाए कि बोलते जा रहे हैं. तो हैव अ इंटरैक्टिव कैंपेन जहाँ पे हमारी साइड से क्विजेज हों, फन क्विजेज हों, या कोई भी टाइप फॉर्म हो या फीडबैक या एनीथिंग है, कुछ भी जहाँ पे लोग यहाँ पे हमारे पास एंगेज हो पाए, रुके. सो दिस इज ऑल हाउ वी आर गोना क्रिएट द कैंपेन. ऑल्सो कैंपेन कंटेंट क्रिएशन के लिए हमने एक चीज़ और सोची है. आजकल एक चीज़ ट्रेंड में है कि लोग LLMs यूज़ कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो कि लाइक हमने जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 और 120 रील्स बना ली हैं, तो उनको डेटा सेट को ट्रेन करें AI पे, एंड दैट विल हेल्प अस टू जनरेट रील. अब वो AI हमारे लिए रील जनरेट करेगा, हमारे लिए कंटेंट जनरेट करेगा, विच विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, और टीम के लिए अच्छा है एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी. So for all these options, we can try for LLM also. So this is our in our exploration mode only. We have not decided yet. So this is how we're gonna create content. Now coming to budget allocation, how much budget we are gonna allocate to everything. तो फर्स्ट कम सोशल मीडिया एड्स, जो मैंने आपको बताया ह्यूमरस एड्स. तो उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या गूगल पे कहीं पे भी रन करने के लिए बजट वी हैव डिसाइडेड एज 30%. देन इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, 25% ऑफ द बजट इज गोना गो देयर. देन डिस्प्ले एड्स की, अगर कोई भी हमसे रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या फिर कोई भी एरिया है जहाँ पे लोग जा रहे हैं और वो हमारी मार्केट, उन लोगों, हमारी मार्केट और उनकी मार्केट सेम है, तो वहाँ पे हम अपनी डिस्प्ले एड्स करें और रन करें. एंड अदर थिंग इज की रेफरल्स की मैं यूज़ करता हूँ, मैं रेफर करता हूँ आपको, तो आप टूल स्टेज पाएँ, तो उस वाले बजट के लिए. एंड इन स्टोर प्रमोशंस कि अगर मैं किसी स्टोर पे जाऊँ तो स्टोर वाला खुद बोल रहे कि आप टूल स्नेच के थ्रू आइए सर, वो टूल स्नेच अच्छा है. So we have allocated 20% budget for all these three things, and then 15% budget for interactive content development. कि जो मेरा interactive content था, quizzes थे, तो जो उनके winners हैं, prizes हैं, तो 15% for that, and rest 10% for emergency की कोई भी miscellaneous और ऐसे खर्चे आ जाते हैं, तो 10% for that. So this is how we are going to divide the budget, divide budget for the campaign. Now coming to key performance indicator कि हम अपनी जो कैंपेन है उसको कैसे मॉनिटर करेंगे. सॉरी, हाँ. तो वन थिंग इज कि मैट्रिक्स नंबर सबसे ज़्यादा बोलते हैं एंड सबसे सही बोलते हैं. तो वी आर ना चेक केस कि हमारे सोशल मीडिया पे हम जो अपना कैंपेन रन कर रहे हैं उस पर कितने इंप्रेशंस हैं, लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, शेयर्स हैं, कमेंट्स हैं. ऑल्सो व्हाट वी आर गोना मेजर इज क्लिक थ्रू रेट्स कि अगर हम हमारे पास कोई आया है, हमने कोई लिंक सेंड करा है, तो उस पर कितने लोग आए हैं, कितने देर रुके हैं हमारी वेबसाइट पे और कितनी देर में चले गए हैं. क्लिक थ्रू रेट्स की कितनी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, या फिर लोग कितने हमें जान पा रहे हैं, या फिर हमारा कैंपेन रन होने के बाद जो शॉप्स हैं क्या वो हमारे साथ आना चाह रही हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं. तो ऑल दीज थिंग्स की कन्वर्जन रेट्स क्या हैं. ऑल्सो वन थिंग वी कैन ट्रैक इज ट्रांजेक्शन्स की, लोग हमारी प्लेटफॉर्म पे आके कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कि वो बस आए नहीं है, प्रोसीजर को कंप्लीट करके गए हैं. ऑल्सो कैंपेन के थ्रू के जो हमने क्विजेज दिए थे, तो उसमें कितनी ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, वहाँ पे कितने इंप्रेशंस हैं. एंड ऑल्सो फाइनल द ब्रांड इम्पैक्ट कि फाइनल अब हमारा कितनी ब्रांड पोजिशनिंग हुई है, कितना ज़्यादा लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज करा है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कि हाउ वी आर गोना कैलकुलेट कि हमारे कैंपेन कैसा गया. सो थैंक यू. दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग टू रन आवर मार्केटिंग कैंपेन. All right, thank you. I think overall you've covered all the boxes, you've checked all the boxes, you've given the details on a lot of things. Just a few open points on. I think you really need to think about the total addressable market, because if you're saying the total addressable market that you want to capture is 56 million, that means your potential revenue, maximum potential revenue is around 10% of that, which is 5 million.
So that is not a lucrative business for any investor to invest in. So if you feel that total आपका business ही करीब 40 crores तक बनेगा, then I mean there's no point even thinking about a tech solution to this. You have to also start digging deeper on the OEM part delivery, upskilling of these service centers. So one thing which was not clear in the presentation was that are you want to build your own physical centers, or you are just going to get some existing centers on your platform? How will you make sure the quality is there? How will you make sure that the original parts, original sort of trainings are given to those, repair mechanics or whatever. So, and then finally, there was no clear list of devices that you want to cover. Is it phone repair? Is it washing machine repair? Is it circuit repair? Because it's a very diverse market. Actually, we will enter the market only with smartphone and laptops. So the issue with smartphone and laptop repair is now if you go with the OEM parts, the cost in itself is going to go so high. Then what is the difference between an authorized service center and you? Because your costing was like 40 rupees and 10 rupees per booking. I could not see that will be a profitable business. And these are points that you have to again go back to the drawing board and see what the market is, what market size is. Market size का मतलब ये नहीं होता कि वो सारा market या सारा जो number वहां दिख रहा है that's on us. Market size का मतलब होता है that is the market's potential and you will get a piece of that. So in the 556 million, you might get 10% if you're really good. So I think that needs a little more work, that little more fine tuning. What is the cost involved for getting an OEM part? What is the cost involved to train somebody to be an official repair person? Because OEM will not take the warranty because once the device is open, they don't take any warranty or guarantee, even if it is having an original part. So I think there is a lot of moving pieces in this. You have to start, going back and digging deeper on each of those pieces. One feedback for everybody, I don't know, few people have left, but please share the sources of all your truth. Anything that you're showing on your presentation, I could not see any source of truth, reference, link to any of those things. Please share a source of truth. If it is a focus group, if it is a person, that's okay. If it is a research paper, that's okay. These industry size wala jo slide tha, it was, I mean, you're just putting a bunch of numbers online and what's the source of truth for that? So don't share anything that you can't go back and show it where it came from. And it's always a good practice to share where the data is coming from. Okay. Sure, sir. I will correct it and then submit the PPT. So overall, I think again, to business idea, I had some comments, but overall, the presentation wise, you guys did good. You clearly articulated the challenge. There were numbers. So 3 on 5 for your problem statement. Then the other thing that you're looking at. Market analysis, user persona. Market analysis, I think you've done a good job, but again, there were no sources. So 3.5 on 5 for that. Category and number of devices were missing. So 3 on 5 for your user persona. में थोड़ी clarity मुझे कम लगी. So I think you have to clarify who are these people who are going for third-party repairs. What is the segment of a device? अगर आप कह रहे हैं कि if it is just the mobile phones and laptops, what is the segment of these devices? What is the warranty around it? How many used devices are there in the market which are out of warranty? So things of I mean, again, you got to go deeper on the sort of categorization persona.
overall content. So you had a decent set of strategy for your digital marketing. The KPI sheet should always have numbers. You can't just have text on a KPI sheet. The number should be in terms of target. Number should be in terms of time, target, money, whatever that is. It needs to have quantities. So 3 on overall strategy and 3 on content. So overall, I think a decent attempt in terms of your presentation and what you were trying to say. But from a business, I would request you just go back to the drawing board and figure these numbers are, and per month. I mean, you want to have a business which is profitable. I could not see that in the presentation. Sure, so we will work on it. Okay. Any questions? So yes, actually, I believe in that everything looks good on paper. Yeah. But this was not even good on paper, is what I'm saying. This was. Yeah, I agree on that also. But Yeah. if we see like we can make very super fascinating plans on paper. Real part comes जब हम उसे execute करने जाते हैं. Yeah. So how, like I just want to know what do you think कि सबसे जो first step जो होना चाहिए हमारा इसको execute करने के लिए वो क्या होना चाहिए? Like what I have in my mind is कि first find at least 10 shopkeepers who can work with you for the initial stage, and then expand it. Then see how it goes with them and then expand it according to that. नहीं, I agree with that. I think वो second step है. First step मुझे लगता है, and that's why I was saying कि you have to go back and see कि market कितना बड़ा है. ठीक है, आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, आपने 10 दुकानों को कर लिया, 100 को कर लिया, 1000 को कर लिया. अब 1000 दुकानों से आप 40 रुपए पर मंथ ले रहे हो. That is 40,000 rupees a month. And you're like 6 people working on a project. My point that I'm trying to make is you have to really see what the problem is. Don't take any step further unless you have a clear problem statement. In this case, you do, let's say. Okay. And the second then is how big the problem is. Okay. I mean, does it need this big of a solution is what the point is. Like, if it is a problem, yes, fine. Okay, the first step is we identified a problem. Yes. We all believe and we know based on facts, based on focus group discussions, whatnot, it is a problem. Fine. How big is the problem? That will then decide how much effort, how much complexity, how much scaling would this product need. And if the answer to that question is coming out to be that the maximum this business can reach up to is 40 crores, then probably is it a good business? I mean, I don't know. It could be a good business for you, but for an investor, will it be a unicorn ever? I don't think so. Or could be anything. But I'm just saying you at least have those two answers very, very clear for you. And then you actually, whatever you were saying is right. You go in, you get some things done, you then pivot, then you learn new things, create new versions, be fast, fail fast, and all of that fancy stuff. Okay. I got the point. Yeah. Thank you so much, sir. All right. Thank you. Who's up next? हो गया क्या सभी का? It seems. Gyan Sagar. Yes. Yeah, Gyan Sagar. Hello, sir. Just a second. Just a second, Yash. So after Gyan Sagar, do you have anyone? Harsh. I think Gyan Sagar is last. Or Unilever. Okay. So after Gyan Sagar, we have one more. तो ज्ञान सागर आपको 15 मिनट ही मिलेंगे for the pitch, so that
we can cover it in the next. Yeah, half cover an hour. it in 15 minutes, Okay, please. sir, no worries. So maybe Group, 10 minutes for your presentation. yeah, Okay? sir, no worries. Group में तो 5 मिनट आया था. 10 minutes तो enough है. So this side Yashul from the team Gyan Sagar and project name is Universe. You can see the logo. Is my screen visible? Yes. So let's move to the problem statement. So college students, especially first year students, like don't know how to start their college life. Like they don't know how to make the most of their college life due to lack of guidance. So they take some fault decision, and there's some lack of personal and professional growth. What can be solution for it? So we are making a platform where the student can uh, where the student can book a one-on-one mentorship session from their alumni or their senior students, so they can seek valuable knowledge. Excuse me. Hello, should I continue? Yes. So this is the user persona. This is the most ideal user persona we can see. So let me give you the real example. I can give you the real example of myself. So in my college first year, I reminded, like, I don't have enough connections in college. Like, I am from Haryana, and my college is in Delhi, so I'm new. I'm very new to here. Like, I don't have any new friends. Not, like, don't know any one to talk with. So it's very difficult for me to be in the classroom to talk with people. Like, I don't know how to connect with someone. So and I can say that from the experience, you really get the like-minded people from your classroom. So there is very hard to find someone like-minded like you. If you want to grow, you have to find people who loves to grow. Like, you can discuss your ideas, like anything. So this user persona, you can see this is Nana. So its problem is it's difficult for her to connect with the seniors and alumni, and she is very kind of introvert. She scrolls LinkedIn regularly, but uh, didn't get in the conversation with any of the seniors. So she relies on online resources, but everyone needs personal guidance. So what are the needs? So I think there is a need of a platform where you can book a mentorship. Like, when I say mentorship, like, it can be on anything. Like, for example, if I say I lack in self confidence, like, I want someone to give me guidance, like how to improve your confidence, how to talk with people. So I can book one of the mentors who achieve something in that, so I can talk to him, and be a more confident person. So this is the user journey, and as you can see in the table, these are steps. Like, first of all, they get to know about the universe, then they will log into it, then they will create their profile, and book a mentorship session, and give a valuable feedback, and she can refer others as well. So this is the major user journey. Now, what are marketing goals? So first of all, we have to increase awareness, like how much mentorship is important to for students especially, and we also have to enhance engagement in our platform, like platform like these, especially related to college students, need so much advertisement on social media to gather college students. Like, like most of the students, they need something quick. Like, they need something, response quick, like उनको उनका जो रिवॉर्ड है उनको जल्दी मिल जाए. And for the marketing, we can partnership with colleges as well. Like, we can sponsorship hackathons. We can फेस्ट में हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, कॉलेजेस फेस्ट में. एंड
कहीं ना कहीं कॉलेज में सोसाइटीज के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट वी कैन डू with our platform. And what can be a marketing budget? So as I have said, ki social media marketing is very important, and we also think of the campus ambassador program. Like from every college, we will find some students who can be the campus ambassador for us, so they can promote our platform on their colleges. And we will spend 10 to 15% on the content creation, as it is also very important in nowadays. And I have stated mentorships, partnerships and events we can do as well. So this can be the our monthly estimated monthly budget, 50,000 to 1 lakh. And who are our competitors? Like LinkedIn is one of the major competitor we can see. Like जितना भी मैंने आइडिया पिच किया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये आता है कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अपने एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। लिंक्डइन पे एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली हर कोई मैसेज करता नहीं है। लाइक हमारे प्लेटफॉर्म में we are also focusing on making a community where you can send question, and the group of students can reply to that as well. And there is one more thing from the LinkedIn, that there is a lack of one-on-one mentorship session. Like you can ask questions, like, but no one has time to give you mentorship to on which topic you want. And on my thought, honestly, LinkedIn is just another platform to to make you more jealous of others, just like Instagram. So and this others are our competitors as well. And in the previous session, we get to know about the, if you remember, sir, you get to know about the team high college. Like they are also doing the same thing. Like but there is one thing they are lacking, is mentorship, like which is a core problem statement. They are focusing on more on a building community of colleges, and giving events on information. Like we also have a feature of events information as well. And when I'm talking about mentorship, I'm not only talking about the tech stuff. Like if I give example, like if I love to dance, I want to find find students in college itself for dance group. So it's very difficult for me to find students of other professions other than tech, especially BTech colleges I'm talking about. So in our platform, we can provide mentorship of any cultural activities you want, whether it is dance, music, stand-up comedy, like anything you want. There is a we can there's already they can be a mentor as well of any other niche you want. And this what is our market position? Like target audience. So we are now targeting BTech, especially BTech freshmen and undergraduate students looking for guidance, mentorship. And what is our USP? So USP, मैंने as I said, कि we are hardly focusing on giving the mentorship to the students, so they can uh, you know uh, they can do more, they can make their most of their college life, and वो professionally भी growth कर पाए अच्छे से, and they can build their network as well. And what are the channels? So special Instagram is the major channel we have to promote. And campus ambassador programs, LinkedIn, YouTube, Google search ads. And I know it's very ironical when when we say competitors, LinkedIn is our competitor, and when we have to promote LinkedIn is one of our channels. Yeah. And for the content creation side, like we don't have any content present right now, but we are also planning for futures. Like we can use stories, testimonials, and we can collaborate with others content creators. हम seminars करवा सकते हैं on week, monthly में एक दो seminars करवा सकते हैं हम किसी topic पे.
And this is all we are thinking for now for the more marketing side. Okay. And this is a BMC. So this is all the major value proposition, customer segments, and channel stuff. Like it's the same thing. Like let me focus on revenue stream. So for the revenue generation, as I said, we have a feature of event. So for we can charge event promotion fees. Like अगर हम जोमेटो पे कोई इवेंट सर्च करते हैं, जोमेटो की जो इवेंट वाली ऐप है उसमें कोई इवेंट सर्च करते हैं तो कुछ इवेंट्स टॉप पे आते हैं, सो दे ऑब्वियसली हैव गिवन सम प्रमोशन फीस, so we can charge that. We can also start for sponsorship for other colleges and advertisement on our platform, especially for the college students, and a little platform fee from the mentorship sessions. That's our major revenue streams we are focusing on. So Okay. this is a main pitch. I think देखो, this idea in itself, I think the problem, like we saw the high social network for schools, Yes, sir. that had a specific ask and specific problem that they wanted to solve in terms of connecting everybody. The clarity on the problem statement here, I feel, again, like how do we know that this is a big enough problem for us to solve? I mean, do we even know that if it is a problem or not? Uh, is there a data that you can show? Is there a Yeah, narrative? yes, sir. We had done our research. Like we have the feedback from, we have a response of over 200 plus students. So Right. in that So, in so that maybe, yeah, so maybe show that here so that it can hold the trust of somebody who's listening that, yeah, okay, this sounds like a genuine problem for a lot of people and what could be a potential solution. Now, the other pieces in the presentation, like, you were not missing, you were missing on the content. Thank you for adding your market analysis and like who are your competitors. I think one big competitor for you all is the local clubs, the college clubs that we have. How is it different than a digital club for somebody who's interested? The example that you gave was you're interested in dancing and you would want yes, sir. it's very hard for you to find more dancers in the college. But why, like, are there not any clubs in the college? Are people not talking to each other because you are freshers? Are you not getting into your classrooms and creating the groups and talking to your seniors directly in person? Why do we need to solve it using technology is another question that we can ask at that point. And if you feel that you still want to use technology, it's fine. But any of your competitor can be a physical form of doing things as well, an older way or older process of doing things as well. So how do you replace your physical billboards or physical notice boards with the digital one, with your app? Basically, you create a virtual notice board on identifying that this is a club and these are the members in this club and whatnot. So think from that lens as well, from within a college or campus context as well. Uh, you did share the revenue stream in the last. It was a concern for me uh, to sort of not know where the money is coming from. Uh, you did list out a few things, but I don't know how much money will you be able to make from a campus perspective, because again, you're competing with notice boards, you're competing with the physical clubs, you're competing with everything that's happening in person physically, online. And why would people pay for your platform? So think a little bit more towards how can you make this platform more engaging and more uh, sort of uh, sustainable when it comes to having more and more people staying on it for longer. Yes, sir, definitely. And Okay. sir, Yeah. yeah, sir, for that club part, I would just want to say, like there are auditions for the club. So if if one student is not selected in that club, so
definitely he will miss the chance. And one more thing, so for that college club, you know कि सिर्फ वो उसी क्लब के उसी कॉलेज के बच्चों की बात हो जाती है कि सिर्फ आप उसी क्लब के उसी कॉलेज के बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो। व्हेन सो आप यहाँ पे दूसरे कॉलेज के भी बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक there is one friend of mine in third year. He is very good in acting, like too good in acting. So if I put him as a mentor in my platform, so he can mentor many of the first year, second year students from other colleges as well. And you know, from each session, he can also make money out of it, of his talent as well. So that's the main key point I'm talking about here. So her, Yash, if let's say if a boy from a college X Yes, sir. knows acting and a girl from college Y wants to find somebody who can mentor her. Yes, sir. Now, if this person chooses this boy, कि ठीक है आप मेरे को mentor कर दो, Yes, and there's some mishap happens, like this boy is not, he misbehaved or something wrong happened. How are you going to deal with that in your platform? So for first of all, we looked into this point. हम mentor उन्हीं को बनाएंगे verify लोगों को, and each session we constantly surveillance करेंगे कि how the mentorships are going on, and from every session we will also taking the feedback of the students as well, like what they want, what they don't need. So we will continuously doing the changes in the platform. So for this for platform like this for the college students, you have to keep changing. Like you have to keep connect with the students as well to know how you can make better day by day. No, that's fine. But the problem, anyways, okay, we don't have too much time because there's another group. But I think overall, a decent attempt. I would want you to go back to the scalability of and the complexity of the solution. Uh, who are you actually really competing with? Identify that, and is it really such a big pain point that everybody will start paying you for solving it? Okay. Yes, sir. Yes, sir. All right, perfect. Let's move on to the next one, please. The Thank last you. group we Sir have Marks, is Sir Marks, like Univi. sorry to interrupt, Marks, please. Yes. Univi, you can have your presentation ready as soon as he tells the marks. You can So go. for problem statement, you get 2.5 on 5. Market analysis, it's 2.5 on 5. Uh, the user persona, again, we could go deeper. It's 2 on 5. Overall strategy, it's 3 on 5. Content, you did not have any content. I'm still giving you a 2 on 5 because you were at least able to talk about what are you going to create. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, Harsh. Sir, am I audible? Yes. Okay, so let me share. Sir, can you see the screen? Yes, I can now. Okay, so let me start. So, sir, my company name is Uniwheel. It's a wheelchair attachment. So, let's start with the problem statement. फर्स्टली सर हम देखते हैं ना कि आज के टाइम में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स अफोर्ड नहीं कर पाते और सेकंड एक तो लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस रहता है इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूजर्स के पास उसके अलावा उन्हें एक हेल्पर की हमेशा जरूरत रहती है टू पुश देयर व्हीलचेयर अराउंड और कुछ लोग इंडिया में होता है कि अपने हाथ से व्हील चेयर पुल करते हैं तो फिर उसमें आपका फिजिकल स्ट्रेन और फटीग भी होता है और आप ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते
So this is the problem statement that I saw. मैं अभी जुलाई में जून में आई वाज इन सम हॉस्पिटल, सो देयर आई ऑब्जर्व्ड कि काफी ज्यादा लोगों को मतलब हेल्प चाहिए ट्रांसपोर्ट करवाने में, ऊपर नीचे लेके जाने में। और एक बार मैं मेट्रो से घर पे आ रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि समवन डिड अ फ्रेजाइल इनोवेशन, बेसिकली अ जुगाड़ इन हिज व्हीलचेयर। ही एडेड सम मोटर्स एंड ऑल दैट handles and stuff, so that like he motorized his wheelchair. So from that I got like sense of कि क्या इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके अलावा हमारे पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस तो यही हैं। एक तो मैनुअल व्हील चेयर है, आपकी नॉर्मल व्हील चेयर। एक हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड देयर आर सम अटैचमेंट्स which are known which possess non universality of wheelchairs, like convertible kits आती हैं, but those convertible kits does not work with all the wheelchairs that are in the market, right? So अगर आप उनकी ब्रांड से ही व्हील चेयर खरीद रहे हो, so तभी उनके साथ ही वो compatible होंगी। ऐसा नहीं है वो सबके साथ compatible है। From there I created this solution. So basically it's a like conversion kit. So as you can see in the photo here, like the front part of it, ये जो सामने व्हील है और ये सारा इसका ना पूरा सिस्टम है जो कि किसी भी व्हील चेयर के आगे अटैच हो सकता है। तो इंडिया में सर होता क्या है कि 90% ऑफ व्हील चेयर सेम साइज की होती हैं, और वो साइज है वन साइज फिट्स ऑल करके। सो ये जो अटैचमेंट है ये लाइक 90, उससे अलग भी अगर आपकी कोई छोटी मोटी व्हील चेयर है, वी कैन एडजस्ट टू दैट। तो आपको व्हील चेयर हमसे लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी घर पे व्हील चेयर कोई यूजर है, उसके पास व्हील चेयर है, यू जस्ट नीड टू बाय द अटैचमेंट, और आप इसको अपनी पिक्चर के सामने अटैच करके ट्रेवल कर सकते हो। और द अटैचमेंट टेक्स ओनली लाइक 2 minutes टू अटैच, और दिस वर्क्स ऑन लाइक बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी, and it can travel up to 20 kilometers per hour, so long distance भी कोई वो दिक्कत नहीं है। And it's compact and easy to install, and it takes only 2.5 hours to charge fully. Other than that, it enables smooth and effortless movement. So this is what I have created. So our manufacturing cost was like 21,000 for it, and This is the on price, top of the existing wheelchair cost, right? yes sir. Okay. And so this is the manufacturing cost, and we are going to sell it for 30,000. Like What this is is the the cost of a wheelchair in India? sir, it depends. The pricing starts from 2,500 and it goes up to 10,000. A normal wheelchair, depending on the branding and all that. What's the cost of a high-end electric wheelchair? Sir, wheelchair starts from 50 to 60,000 and it goes up to 4-5 lakhs. Okay. And even more than that. Yes, sir. Keep moving, please. And Sir, again, so we're left this- with 8 minutes, so we'll have to kind of wrap it up in that time. Okay, sir. Yeah. So can I start? Yes, yes, please. So this is the financial projections. So in India, only 9.1% of the wheelchair users are using electric wheelchair. 90.9% are using just a manual wheelchair. And on the green pie chart, you can see it's the global view, and only 12.5% are electric wheelchair and others are manual wheelchair. And the source for the Indian like Indian survey is the government survey which was done by the Health Ministry in 2014 to 2018. So this is the global wheelchair market. As you can see, it's a $4.8 billion of global wheelchair market. And as you can see, the source I have taken it from Venue Research. So how we are going to market our wheelchairs? So we are going to collaborate with healthcare facilities, partner with NGOs and disability organization, online marketing and e-commerce, of course, and dedicated medical equipment sites
So platforms like healthcare, one MG or Medilife focus on health products, so we can provide our product to them. So other than that, like while I was doing survey for the my same idea, so ना हमने मेरा एक brother है, he is a doctor, so he is right now in Ukraine and he's doing his MBBS from there last year. So he helped me to do the survey. So I like conducted with the help of my brother survey in Ukraine also. So after the war, the candidates like the people who use wheelchair have increased, very much. So he presented this idea there, and like around he presented it to 56 patients, and like most of them liked it, and they are ready to buy it. But at that time, our product ready nahi tha. So like this is what like we already have like orders from Ukraine. So yeah, Okay. this was thank you so much. This was all I wanted. All right. Thank you for keeping it short and simple. I think uh, again it's a novel problem. I think the idea is interesting. Uh, Whenever you're talking about, and I've been saying this time and again, whenever you're talking about problems, please add quantities. आपकी Okay. पहली slide में there should be a story with numbers. Yes, sir. Meaning X number of people are affected by whatever. In Okay, sir. India, the number is so and so and so. This is the cost and this is the challenge that they face, and then this is the solution that we are bringing. So it has to be a very cohesive dynamics between numbers, between the quantities and qualities of the problem in itself. So spend some more time on identifying that, clarifying that. The cost comparison, like, there was an opportunity for you to show, okay, this is one option, this is second option, this is third option, this is our option, fourth option, and this is the best from all of them. How much of it is coming from insurance? How much of it is coming from direct user out of pocket? There was no mention on user persona or industry persona. I think you got to spend a little more time on understanding. Are you going B2B? Are you going B2C? Bless you. Or Sir, is this? Yeah. yes, sir. Yes, sir. Please continue. So I think I would want you to spend a little more time on this. The idea is good. I Yes, think sir. that the elements that we talked about in our session, we need to start integrating those a little bit more. There is plenty of opportunity to, again, which you have missed here. On every slide, there should be a brand name or the logo. You don't have that. Yes, sir. Uh, I don't. so why are you missing the marketing opportunity on any presentation? You got to be hungry for real estate, and real estate on digital is again getting expensive. So every presentation that you make, everything that you make should have your logo, should have your name, should have your whatever at the bottom somewhere, so people can see. So don't miss out on that. Yes, sir. The user persona, again, you had to create one, you did not. Overall strategy, maybe I need again time का mention नहीं है उसमें, पैसे का mention नहीं है उसमें, potential sort of KPIs का mention नहीं है, like how will you be setting those targets and then achieving those targets and exceeding those targets in the long run. Again, you did not show too much of the content, which can be uh, again the lack of the storytelling cohesiveness about uh, the first part of your presentation could have been told way better, and that could then eventually be added to your marketing content themes as well. So I think you had to do a little bit more work. I don't know how much time you spent, or are you working with a team on this? But Sir, I am working alone on this. So yeah, one man, so like it's like add more team members and spend a little bit more time. I think it shows that you've not been able to spend too much time or maybe effort on this. So for your problem statement and the how big the problem is, what the problem is, I'm giving you three.
For the market analysis, again, I'm giving you a 2.5. There's a lot more out there which you can analyze and identify. खासकर इसमें Yes, sir. आपने बहुत पुराना data इस्तेमाल किया है. Yes, sir. Never use old data and never use data which is less than 2 years old or more than 2 years old. Okay. Okay. User persona में आपने नहीं share किया है कि क्या है user persona. Overall strategy again, so I'm giving you 2 for user persona. Overall strategy ko I'm giving you 2.5. And for content, you have not shown me much, so I'm giving you 2 for that as well. Okay. Okay, sir. Okay, sir. I will keep that. Any questions? Is this fair? Is this fine? Sir, I think it's fair. I have not spent much time on creating the PPT, I guess. So yeah, I deserve that. Other than that, But the idea is good. I mean, I think a lot of other people or examples that अभी हम बात कर रहे थे, उसमें idea में challenges नहीं लगा, even though उनकी presentation ठीक थी overall. आपका idea अच्छा है, but maybe we need to do a little bit more work on strategy and then planning and everything else. yes, sir. सर असल में मैं काफी चीजें शो नहीं कर पाया था अभी पीपीटी में. आई हैव डन माय ऑल द रिसर्च. लाइक आपने कहा ना कि कितनी क्या इंडिया में यूजर्स हैं और कैसे यूज कर रहे हैं. लाइक आई एम डन विद माय रिसर्च. उसके बाद ही मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया. बट इट्स जस्ट कि मैं अभी पीपीटी में प्रेजेंट कोई नहीं कर बात पाया. नहीं. That's okay. Don't worry about it. The idea में है दम, and I think you can do something with it. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Thank you for being patient. Thank you for staying up till the end, till the last minute. Thank you, sir. Appreciate it. So I guess these are all the students we had today. Okay, so total is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presentations over 2 sessions. Yeah. Okay. ठीक है, Janvi, I think we can probably circle back. I would love to talk to the program team and see, how can we help the kids to be a little bit more better. My overall general observations. If you can help us schedule that call, that will be great, so that I can share. So would you like to talk to my team at NASCOM? Yes, the program team, the people who are kind of helping the kids, because Yes. the whole intention is for us to help them, right? So Sure. I'll share some key insights and probably we can decide something. Okay, sure. I'll let you know by Monday. I think this call can only happen after Diwali because No worries. Everyone would be on leave after Wednesday. No worries. And I apologize for making you work on a Saturday. No, that's okay. Okay, so I'll get back to you on Monday. Perfect. And thank you for being patient and being there. I appreciate that. Thank you so much, sir. Take care. God Okay. bless you. Bye. See you. Bye-bye.